Good afternoon, friends. Let us proceed ahead. You have to settle down quickly. We are late by 4 minutes. 1:30 is the timing. It's 1:34. Yesterday, we kick-started with investment accounting. I gave you some basics on investment accounting yesterday. We did some wonderful details. I said that the standard accounting standard 13, even though it is dealing with investment accounting, it actually does not define what the investment is. So we have to understand meaning of investment in common parlance. आम आदमी की भाषा में हम इसे क्या बोलेंगे? In a common parlance, investment is a surplus funds invested somewhere else. Now that somewhere else is important. Why somewhere else is important? Because if you are putting the money in your own entity, own business, then it could be either plant, property and equipment covered under accounting standard number 10, or it could be intangible asset covered under accounting standard number 26, depending on nature of investment. So I'm not talking about the money being invested in our own business. That is different. That will go to the respective standard. I'm talking about money being invested somewhere else. Then I discussed, sir, you are not audible. Viditi, Zoom public, just confirm. You are not audible. You are, very good. So, Viditi, तू म्यूट क्यों गई? Join with computer audio करके option रहता है. So, we teach computer also. So, investment is money being kept aside or money being invested somewhere else. Somewhere else could be another entity, it could be subsidiary, it could be associate, it could be joint venture, or it could be just a investee company. Investor and investee. Are we learning accounting in the books of investee? Answer is no. We are learning accounting in whose books? Your book. 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤𝐬 books. That is books of investor. You can invest in what? Either equity or debt or real estate or commodities or precious metals, right? You could invest directly or you could invest indirectly. Choice is all up to you. And then I said, let us understand accounting for debt instruments in the books of investor. Tell me, एक कोई investor होता है, वो shares कैसे acquire करेगा? It could be acquired either through primary market or through a secondary market. My question to you is, National Stock Exchange is ... Option A, primary market. मेरा बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तुम्हारे जैसे होशियार बच्चे कभी मुझे मिले ही नहीं. Option A is, क्वेश्चन क्या है? NSE is primary market. Option B is secondary market. Option C. चलो देने के लिए मैं देता हूं both. Now let me let me create a poll. Whether I have poll there. Build star question mark. ये क्या है? ये कुछ तो poll is not there. Create नहीं होगा यहाँ से. Zoom public, type your answer in chat box. Let me see. How many are in favor of option A here? यहां पर A option. A. How many are for B? Option B. Good. Option C. Good. Zoom पे भी majority is B. Very good. So we have Dandekar Bridge public. Dandekar Bridge is an auspicious place in the Pune city. अरे बेवड़ो, जो आईपीओ होता है वो क्या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं होता क्या? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. मेजॉरिटी पब्लिक वोटेड फॉर सेकेंडरी मार्केट. आई नो, टिपिकल लेवल ऑफ पब्लिक. स्टॉक एक्सचेंजेस वर्क फॉर बोथ प्राइमरी मार्केट एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट. एलआईसी का आईपीओ आने वाला है अभी मार्च महीने के अंदर, लार्जेस्ट इन इंडिया हिस्ट्री. वो क्या है, तुम्हारे सारसबाग में आने वाला है या गुलटेकड़ी मार्केट में आने वाला है? That is going to come on what?
National Stock Exchange. So NSE is both a primary market where companies can come and raise the funds. Primary market is basically raising of funds, capital market. So in a primary market you raise funds, company issues the shares or company issues debt. कल मैंने example भी दिया था यार. Reliance raised the money or Reliance raised it privately first and then listed it onto a stock exchange, debentures. So stock exchange पे दोनों markets होते हैं. कौन से दोनों market होते हैं? Primary as well as what? Secondary. National Stock Exchange क्या है बच्चों? National Stock Exchange is what? Is it a government? Then what is it? NSE is a company. Stock Exchange एक company होता है. It's like a private sector here. There is nothing crazy. Stock Exchange is not a government. Stock exchanges are regulated by government or government body rather. That is called as SEBI, Securities Exchange Board of India. SEBI regulates the stock exchanges. So you can have either primary market or you can have a secondary market. So as an investor, I can buy something in a primary market or secondary. Difference क्या है? Accounting में difference तो होता नहीं है कुछ. But the way the price is determined in a primary market and the way the price is determined in the secondary market is different. In the primary market, the price at which securities are issued is decided by company in consultation with merchant bankers. So LIC, when it is going to come up with the issue of shares, expected to be around 1800 to 2000 rupees per share. At 1800 to 2000 rupees per share, the price of shares of LIC is determined by whom? LIC itself plus merchant bankers who are consulting LIC. That is primary market. Secondary market में जो rate आता है stock exchange पे आप देखते हो वो कहाँ तक कहाँ से? Demand and supply. Market forces affect demand and supply. So in a very simple language, this is basics of sense actually. This should have been prevailed after passing foundation, but नहीं है. मैंने क्या बोला बच्चों? मार्केट के दो बच्चे होते हैं. कौन से दो बच्चे किए हमने? पहला बच्चा प्राइमरी, सेकेंडरी. Both the markets may be on stock exchange, outside stock exchange. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे ही खरीदने चाहिए. It is not necessary that you have to buy shares on stock exchange. SE is not iPhone. आधे लोगों को वो भी नहीं समझा होगा, छोड़ दो. स्टॉक एक्सचेंज पे भी होता है. बहुत सारे लोगों को लगता है कि शेयर खरीदना मतलब मेरे को स्टॉक एक्सचेंज पे ही जाना चाहिए या सेकेंडरी मार्केट इज ऑन स्टॉक एक्सचेंज. नो, देयर कैन बी अ मार्केट outside the stock exchange also. For example, right now just before coming to your lecture, I bought some shares outside the stock exchange. So yes, so I bought the shares of National Stock Exchange. This is a transaction that I did with a person called as 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤𝐬 from Kolkata. So he told me the terms and conditions of buying a share somewhere here. Hi, in regards to your intention of buying 2000 shares of NSE, as we discussed over the call, something. We are open to buying at something. I gave a confirmation. Hello, I accept the offer of 2000 shares. अभी 12:16 के खरीद लिया और पैसा उसको ट्रांसफर कर लिया. कहां पर किया मैंने बाय? Where did I buy? Did I bought those shares on stock exchange? No. अब तक आपके दिमाग में क्या था? शेयर खरीदना है, बेचना है तो कहां पे बेच सकते हैं? स्टॉक एक्सचेंज. किसने बोला? Stock exchange is one of the organized place where the shares are bought and sold. But there is a huge market outside the stock exchange. The fancy language. Now outside stock exchange बोला तो तुमको भी समझा. If I want you people not to understand or you want to impress someone, OTC, over the counter. So two people meet over the counter. Now counter need not be literally there. So it may be
mutual discussion over a telephone call, Zoom call. So you meet and you enter into the transactions. So these transactions, hello, kuch baja na? These transactions happen normally. These transactions happen either on the stock exchange or outside the stock exchange. We have to account for these transactions in the books of investor. The first transaction that I am picking up for explanation is accounting for debt instruments in the books of investor, all debentures or bonds. Whatever name you want to use, it is irrelevant. I said that companies do issue debentures basically because they can get a savings in interest cost. Because when you approach investors directly, you do save what? Certain interest costs as compared to borrowing it from bank. Bank is like a middleman here. What you are trying to do is you are trying to eliminate a middleman in the process. So obviously you will get a better price from what? Investors, right? Like that. So companies do issue debentures. I am explaining certain basic things about debentures. So I explained coupon rate is a basic term which could be fixed rate or which could be a variable rate. Frequency of coupon payment, very important. Half yearly हो सकता है, yearly हो सकता है, quarterly हो सकता है. You have to read the question very carefully or terms and conditions, how that interest should be paid. Law does not define it. Law does not define. Every company has to decide. So in case of government bonds, normally Government of India gives the interest on half yearly basis on 30 June and 31st of December. For corporates, it is up to a company to decide when to pay the interest, right? तो कंपनी ने बोला हम 30 जून को इंटरेस्ट देंगे. कौन से पीरियड के लिए? जान से लेके जून तक. From Jan to June, interest will be paid by company on 30 June. But I told you, if you want to pay on 30 June, the process or the working must happen before 30 June. In exam, this happens overnight. In same second. In exam, so far I have not seen the record date. So if the payment date is 30 June, record date is also on 30 June. 30 जून को सुबह हमने एक्सेल फाइल बनाने का काम शुरू किया. 5 मिनट में हमारा एक्सेल फाइल बंद हो गया. 3 मिनट में हमने बैंक को ईमेल किया. चौथे मिनट में पेमेंट हो गया. As simple as that. But in real life, there is some time that you require for preparation of finding out the list of debenture holders, their bank account details and everything. That is why you have a concept of what date? Record date. So, whosoever owns debentures on record date shall be eligible to receive the interest for the entire period. This has to be imbibed on your mind. For the entire period. Even though you own debentures for one night or one day or 2 days, you will get interest of the entire period. Period can be quarter, 6 months, year, whatever. So frequency of interest payment, then there is interest is on face value. At the end of it, you are going to get a redemption value and there is certain record date. I told you, right? So I gave you a simple example. And this is where I have to explain you now something more if you are interested. I said a company has fixed 15th of June as a record date. Company has fixed what? 15th of June as a record date. Payment date is 30th of June. Right? 30 June is a payment date. 15 June is what? Record date. तो कंपनी ने 15 जून को लिस्ट बनाना शुरू किया. 30 जून तक लिस्ट बन रहा था या जो भी कर रहे थे छोड़ दो ना यार. हमारे पास एक ससुर जी है रागा, who bought debentures from Mr. Namo on what date? 10th of June. 10 जून को उन्होंने डिबेंचर खरीदा और 17 जून को उन्होंने बेच दिया डिबेंचर्स. अज्यूम करो 17 जून को डिबेंचर्स बेच दिए. अज्यूम, was he a debenture holder on 15th of June? बाकी लोगों को यस बोलने नहीं आता है. तो will he receive interest for 7 days, 2 days,
6 months, 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा उनको, फिर आप ऐसे करके प्रॉफिट कमा सकते हो क्या? आंसर टू दैट इज नो। बट कुछ कमीने होते हैं हमारे कंट्री में जो इससे इनकम टैक्स के लिए लॉस क्रिएट करते हैं, एंड दे ट्राई टू सेव द टैक्स ऑन दिस। आप बोलेंगे कैसे? सुनो, सुनोगे? बहुत खतरनाक है, अगर समझ गया तो तुमको आगे जाके इनकम टैक्स में एक सेक्शन है वो भी समझ में आएगा, बोनस स्ट्रिपिंग, डिविडेंड स्ट्रिपिंग, इंटरेस्ट स्ट्रिपिंग, सेक्शन 94 you'll understand whenever you learn in income tax after 2-3 months। कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है। कंपनी ने तो बोला हम 6 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे। नाउ मार्केट हैज टू अंडरस्टैंड समथिंग। लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ सम डिबेंचर। फेस वैल्यू इज ₹1000, face value is ₹1000. Assume I say coupon rate is 8% per annum. Coupon payment date पेमेंट डेट बोलो 30 June and 31st December। ठीक है, these are coupon payment dates। If you can recollect something about time value of money that you are studied in the CA foundation, I can explain you something more also। It is nothing to do with the investment accounting। If you understand, well and good। If you do not understand, very good, because you don't have stress, na? Who is more happy? The one who does not know anything of income tax law। He doesn't bother about the penalties under income tax law, due dates, anything। क्यों? उसको मालूम ही नहीं ना क्या होगा उसके साथ, आराम से उसको फर्क ही नहीं पड़ता कुछ, रिस्क फ्री आदमी है, काइंड ऑफ दिस थिंग। सो आई विल एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल। If you understand, very good। If you do not understand, it's still okay, because ultimately chapter is about what? Investment accounting। But I'll explain something more। accounting के ऊपर हम ये concept अगर समझ गया, accounting का logic आपको समझेगा। I'll require at least 1 hour to introduce everything concept, and then I'll go down to accounting। नहीं चाहिए तो अभी मैं एंट्रीज कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से बुक में एंट्री 3 एंट्री है पूरे, इसमें 3 पूरे चैप्टर के अंदर 3 entries, and then I have to teach you ledger posting of those entries। उसका भी फॉर्मेट दिया है मैंने। We have format of investment account also। मैंने फॉर्मेट दिया, yes, ledger account format। पेज नंबर 132 I have given a format। पेज नंबर 123 I have given journal entries। So if you want a format, we have ledger format also। So सुन लेना, जिनको नहीं सुनना है सो जाओ या कुछ भी कर लो। Now I say balance tenure। ये थोड़ा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट, tenure नहीं, छोड़ो। I'll split the entire concept into 2 parts। 30 June and 31st of December are what? Payment dates। Record date is 15 June and 15 December respectively, obviously। Mr. Raga buys these debentures on 10th June 2021। He buys them on 10th of June 2021। At what price will he buy? I'll explain how the price of debentures is worked out in the market after I finish up this example। Right now I'm giving you dictating a price। This is a price, I'm giving you dictation of price। But in real life, price is decided by certain
factors. You have to understand those factors. Those who have done Brahmastra will remember we discussed something called as YTM, a yield to maturity. So I'll explain you that factor also. Mr. Raga buys the debentures on what date? 10th of June. At the rate of rupees 1180 पर डिबेंचर. 1180 का उसने डिबेंचर खरीद लिया मार्केट के अंदर. अब मुझे बोलो 10 जून तक जो भी इंटरेस्ट अक्रू हुआ है, इंटरेस्ट इज पेड अप टू व्हाट डेट ऑलरेडी? इंटरेस्ट इज पेड अप टू 31st December 2020 ऑलरेडी. 31st December 2020 तक का इंटरेस्ट ऑलरेडी पे हो चुका है ना. इंटरेस्ट फ्रॉम विच डेट इज नॉट येट पेड? 1st Jan 2021 till 30th March नहीं, 10th of June है. यूजलेस. अभी तक 10 जून पे ना हम. Till 10th of June interest is not paid. But is it accrued? Yes. Interest accrues on what basis? On daily basis, on time basis, right? Interest is accrued. Interest accrue तो हो चुका है. तो मार्केट इतना स्मार्ट रहता है. मार्केट क्या करता है? अब मार्केट में डिबेंचर बेचने वाला लेट अस से नमो है. लेट्स अज्यूम the person who is selling a debenture is Namo. What Namo will say to Raga? Look, Raga, from 1st January to 10th of June, I was the owner of debenture. Who is saying this? Namo. किसको बोल रहे हो? 1 जान से लेके 10 जून तक debentures were owned by me. Am I right? So I want interest from 1st Jan to 10th June. But company is not going to give it to me. Company is going to give it to you. Who is saying this? To whom? Raga. Understood? तो नमो बोलता है रागा को, देख जो प्राइस तू मुझे पे करेगा ना, that price should also include accrued interest. Not only the price of debenture, but it should also include accrued interest. Who is saying? Seller to the buyer. Namo is a seller. Raga is in a market on a stock exchange or outside stock exchange. That really doesn't matter. Seller of debenture will always ask for two components. Number one, he will ask for true price of debentures. He will ask for what? True price of debenture. Whatever is the worth of debenture. How do you calculate that true price? I'll explain. Plus, he will ask for what? Accrued interest. समझा क्या रे? ये 1180 जो है ना, वो दोनों का टोटल होता है. On a stock exchange, whenever you see a price, that price impliedly contains two elements. One is true value of a debenture. Americans call it as a naked price. Americans, so you understand. And it also includes what? Accrued interest. The total of them is called as dirty price by Americans. Indians have given a name as per our culture. X interest price, cum interest price. X is excluding interest, cum is including interest. Right? So ये जो प्राइस है, इसके क्या होते हैं बच्चों? दो बच्चे होता है. एक है ट्रू प्राइस ऑफ डिबेंचर विच इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस. दूसरा होता है अक्रूड इंटरेस्ट विच इज नथिंग बट अ कम इंटरेस्ट प्राइस. टोटल लेके अक्रूड इंटरेस्ट पुट करके तो 1180 आ गया. रहा है ना? ऑन 17th of June 2021, Raga sells these debentures. Raga sells these debentures at the rate of, now right now I had not taken a brokerage, I had not taken a securities transaction tax, I had not taken the stamp duty payable on this.
I have not taken the exchange fees that are payable to the stock exchange. I have not taken the fees payable to the SEBI. I have not taken GST on this because none of this is known to the institute so far. Though the STT was introduced in 1997 somewhere. अपने सिलेबस में अब तक जो मैक्सिमम चीज आ चुका है वो है ब्रोकरेज, और उसमें भी आधे सम्स गलत सॉल्व किए। ब्रोकरेज का कैलकुलेशन मालूम नहीं है अपने इंडिया में लोगों को। हालत ये है। टीचर्स ऑल्सो मेक अ ब्लंडर, क्योंकि कभी जिंदगी में ट्रांजैक्शन ही नहीं किया ना। डेट मार्केट कभी दिखता ही नहीं इनको, इक्विटी मार्केट करता है। इक्विटी मार्केट में ये कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट कंसेप्ट नहीं होता, डेट मार्केट में ये कंसेप्ट होता है। सो मेरे हिसाब से मैंने नोट लिखा है नोट्स में कहीं ना कहीं, तो ब्रोकरेज ऐसा कैलकुलेट करने का, ऐसा आ गया तो ऐसा करने का। आई विल टीच यू ट्रू कॉन्सेप्ट एंड आई विल टेल यू व्हाट टू डू इन द एग्जाम ऑल्सो। पीपल हैव नॉट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ द ब्रोकरेजेस गेट कैलकुलेटेड। तो मैंने इसलिए अभी ब्रोकरेज वगैरह नहीं लिया, अभी मेरे को विदाउट ब्रोकरेज वगैरह सिखाने दो, क्योंकि आगे जाके मुझे गलत भी सिखाना है। रागा सेल्स डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ समथिंग समथिंग, आई एम कीपिंग इट ब्लैंक राइट नाउ। Pass journal entries in books of Raga. I'll explain the concept and I'll explain journal entries also. It's simple, purchase and sale of asset. Investment is an asset here, right? So like you purchase an asset or sell an asset, journal entries are that simple. Interesting क्या है? Not the journal entry. The background story is important. तो मैंने क्या बोला बच्चों स्टोरी में? Anyone who sells a debentures will always ask for two things. Which two things he'll ask for? Number one, naked price, true price of debenture. Number two, he'll ask for accrued interest. तो स्टॉक एक्सचेंज पे अगर मैं आपको लेके जाऊं, अपने यहां पर स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट, let's say I take you to stock exchange and I show you the debentures of REC, Rural Electrification Corporation. I click on REC, I click on debt series, EQ के जगह यहाँ पे सिर्फ EQ ही है यार। ये this is third class of NSE. NHAI देखते, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका दिख गया बॉन्ड्स। इन इंडिया गिविंग अ डेटा वेरी इजीली टू द पब्लिक एट लार्ज इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे मैं जा रहा हूं और मैंने किसके बॉन्ड्स देखे अभी यहां पर? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आई होप एवरीवन नोज NHAI। तो NHAI के बॉन्ड्स है। हर एक बॉन्ड का या हर एक सिक्योरिटी का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ISIN, International Security Identification Number. So a company issues a debentures in the multiple tranches. You will learn in the law, shelf prospectus करके concept होता है for infrastructure companies. So companies issue these debentures or the bonds in multiple tranches. Tranches is installment, those who did not understand English. सो NHAI ने अलग अलग ट्रांचेस में इशू किया, उसको फैंसी लैंग्वेज में यहाँ पे बोलते हैं सीरीज, N2 सीरीज, NA, NE, N6, ND, N3, N5, ऐसे अलग अलग सीरीज है। तो आई एम लुकिंग एट दिस सीरीज N2 सीरीज। N2 सीरीज का कुछ ISIN नंबर है। इट्स अ बॉन्ड हैविंग अ कूपन रेट ऑफ 8.3% per annum. This interest is not taxable, it's a tax free. There's a provision under income tax law section 1015 Roman 4 subclause H. So under that section this is exempted from the hands of investors. They are not supposed to pay the income tax onto it because it is for the building a nation. NHAI highways बना था ना, तो 8.3% है। These debentures are going to mature on what date? 25 January 2027. Today they are opened at 1212. Close price is not there because market is still open. We are in between the trading hours. Last traded price right now is 1211. 1211. That today these bonds are down by about 0.1% or 1 rupee 26 paisa. 4,500 quantity is traded worth around 54 lakh rupees today.
This is today's data. This market, debt market is very small in India on stock exchange. Outside stock exchange, it's a huge market. Plus government bonds का market stock exchange पे नहीं होता है. Government bond के लिए RBI ने एक अलग mechanism create करके रखा है. तो क्या समझा आपको? ये जो लेटेस्ट प्राइस चल रहा है ना, लेटेस्ट प्राइस देखना आप तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो आप, एंड देन यू कैन सी द प्राइस हियर. कितना प्राइस चल रहा है? अरे बोलो 1 to, ये कब चेंज होगा? जब ट्रेड होगा तब. दिस इज द प्राइस 1 to 11.99 और 1 to 12. ये प्राइस कौन सा प्राइस है? स्टॉक एक्सचेंज पे जो आपको प्राइस दिखता है, इज इट अ नेकेड प्राइस और इज इट अ डर्टी प्राइस? दिस इज अ डर्टी प्राइस. प्राइस दैट यू सी ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, डर्टी, नेकेड, समझ रहे हैं ना? नेकेड इज अ ट्रू प्राइस ऑफ डिबेंचर. आप सिंपल इमेजिन करो, नेकेड इज विदाउट एनीथिंग, so without interest. Dirty is you get dirty after. So after you add the interest, that is what Americans did. So you are adult kids, right? So I hope nobody's kid here below 18. Oh, so it's okay. Okay, na? 1 to 1 2. So what is 1 to 1 2? Arey, what is 1 to 1 2? कम इंटरेस्ट प्राइस. बेशरम लोगो, डर्टी प्राइस बोलते हो. आजकल के बच्चे ही खराब है. मैंने कम इंटरेस्ट प्राइस सिखाया, एक्स इंटरेस्ट प्राइस सिखाया, और बच्चे देखो क्या बोल रहे हैं. सो द रीजन ऑफ टेलिंग इज, व्हेन यू रीड सम, सी व्हेन यू गो टू द फाइनेंस लिटरेचर एंड यू रीड सम लिटरेचर, आप कुछ अलग कंसेप्ट आपके सामने, नाम अलग आएगा, आप बोलोगे ये क्या कंसेप्ट है? कुछ नहीं, वही है. दिस इज ऑलवेज अ कम इंटरेस्ट प्राइस. इसमें क्या छुपा हुआ है? इंटरेस्ट. कितना इंटरेस्ट छुपा हुआ, वो कैलकुलेट करने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट चाहिए. इंटरेस्ट रेट वी नो, एंड व्हाट वी नीड टू नो, वी नीड टू नो नंबर ऑफ डेज फॉर विच इंटरेस्ट इज अक्रूड. वो इंडिया में मिलता नहीं है यहां पर, तो इसलिए मैंने मेरा खुद का डेटा दे दिया. तो ये पिछला इंटरेस्ट इसका कब पे हुआ था वो मालूम नहीं. इधर सिर्फ लिखा है नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट. वी डोंट नो द प्रीवियस इंटरेस्ट पेमेंट डेट. तो वो छोड़ो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे डेटा ठीक से नहीं मिलता है. एनएससी हैज नॉट डन द जॉब दैट इट शुड हैव डन. रियली इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है एनएससी के वेबसाइट पे एज कंपेयर टू व्हाट इट इज इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इफ आई लुक एट द अमेरिकन एक्सचेंजेस और आई लुक एट सिंगापुर, इंफॉर्मेशन जितना ज्यादा आप देखो ना लोगों को, उतना डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होता है. बट अपने कंट्री में नहीं है. तब यहां पर ये जो 1180 है, उसके दो बच्चे मैं करता हूं. प्राइस ऑफ डिबेंचर आई विल डिवाइड इनटू व्हाट, 2 पार्ट्स. ए बीजेपी सो गया यार उधर? ए बीजेपी, हाँ कर क्या रहा है तू? हाँ यस, शुभ नाम क्या है भाई साहब आपका? हाँ चिराग. क्या अच्छा चिराग बना के रखा है ना. इंटरेस्ट नहीं तो सीए छोड़ दो, बीकॉम कर दो. इंटरेस्ट है कितना परसेंट? 101%. नहीं रे, 8% इधर. प्राइस ऑफ डिबेंचर comprises of 2 elements, X interest price and accrued interest. जो टोटल आप पे करते हो उसको हम बोलते हैं कम इंटरेस्ट प्राइस. जो ट्रांजैक्शन होता है वो हमेशा हमेशा स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी प्राइस दिखता है वो हमेशा कौन सा प्राइस रहता है? कम इंटरेस्ट. कम मींस इंक्लूडिंग, एक्स मींस एक्सक्लूडिंग. तो रागा ने डिबेंचर खरीद लिए. किससे खरीद लिए? नमो से. क्या रेट में खरीदे रहे रागा ने? 1180 के रेट पे खरीद लिए. डू यू अंडरस्टैंड 1180 का रेट? नाउ व्हाट आई नीड टू फाइंड, what is the true price of the debentures, because that is where accounting will be dependent on. I don't know the true price of debenture, but I know accrued interest. Can you find out accrued interest? Karo, let me see how many of you can find out accrued interest. Do the calculations on your own.
डू कैलकुलेशन सर योर ओन. अक्रूड इंटरेस्ट निकालने का आता है तुमको. टेक 365 days in a year. Let me see whether you have learned average due date or something like that in the foundation. Apply brain. वेट हाथ ऊपर करो. एक्साइटमेंट कंट्रोल करो. बच्चा सबका स्पीड अलग अलग होता है. How do I calculate accrued interest? Accrued interest will be from previous interest payment date till the date of transaction. पिछला ट्रांजैक्शन कब हुआ था बच्चों? पिछला इंटरेस्ट कब पे हो गया होगा? सी कंपनी ने क्या बोला? 30 जून और 31 दिसंबर को हम इंटरेस्ट पे करते. तो प्रीवियस इंटरेस्ट वुड हैव बीन पेड ऑन 31st ऑफ दिसंबर. डू यू एग्री? अब ट्रांजैक्शन कब हो रहा है? नमो कब बेच रहा है डिबेंचर रागा को? 10 जून. तो 10 जून तक का इंटरेस्ट आपको निकलना है 31 दिसंबर से. सो नंबर ऑफ डेज कहां से? हेडलाइन लिखो पहले. अक्रूड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम टॉप ऑफ द पेज. हेडलाइन मीन्स टॉप ऑफ द पेज. Accrued interest is calculated from previous interest payment date. Previous interest payment date till the date of transaction. Till the date of transaction. कुछ समझा क्या रे तुमको? ठीक है. अभी I have to add up the days. 31 days of Jan, 28 days of Feb 2021 है, प्लस 31 of March, April, May and 10th of June को उसने डिबेंचर खरीदा. हाँ ना? कितना होता है टोटल डेज? 161 डेज का इंटरेस्ट निकालना है. इंटरेस्ट विल बी ऑन फेस वैल्यू 1000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 8% इंटू 161 अपॉन 365. 28. अरे इट्स ओके यार. 2829. अब आई होप यू अंडरस्टूड. 35 रुपीज. तो 35 रुपीज जो रागा ने पे किया है वो 1180 में इंक्लूडेड है. क्यों? क्योंकि नमो कोई पागल नहीं है. नमो बोलता है बेटा ये 1 जनवरी से लेके 10 जून का इंटरेस्ट तुझे क्यों मिलना चाहिए? वो तो मुझे मिलना चाहिए. बट कंपनी विल बी पेइंग इट टू हुम? रागा. बिकॉज रागा विल बी द डिबेंचर होल्डर ऑन व्हाट डेट? रिकॉर्ड डेट दैट इज 15th of June. सो नमो रागा से रिकवर करके लेता है 35 रुपीज. सो नमो को 1180 जो मिला ना उसमें हम बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट प्राइस वाज 35.28 ना रे. बोलो आंसर. 1172. इट्स ओके. 1144.72. व्हाट इज दिस? दिस इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस. दिस प्राइस डिपेंड्स ऑन समथिंग कॉल्ड एज YTM. ये YTM क्या है कुछ है वो सब कुछ मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा. शायद मैंने प्रिंट करके दिया है कि नहीं मालूम नहीं. हाँ लिखा है मैंने. थोड़े कमेंट्स लिखे, थोड़ा सा लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा है बुक के अंदर. लिखा है मैंने, लेकिन बताऊंगा मैं अलग से बताऊंगा. दिस इज रिलेवेंट टू द क्वेश्चन. वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग दिस विल बी रिलेवेंट टू सॉल्विंग ऑफ अवर क्वेश्चंस. 1144 is a true price that a NAMO earns. This is what called as X interest price or Americans की लैंग्वेज में. अंडरस्टूड? ठीक है.
Why did we bifurcate this? Because the true cost to Raghav of a debenture is not 1180, is 1144.72, because today Raga has paid 1180 to Namo, but out of that 35 rupees Raga is going to recover from company. Remember, in accounting, simple rule, accounting में कहीं पे भी कोई भी chapter कहीं पे भी आ गए तो whenever any part of the cost is going to be reimbursed to you by government or any third party, that does not become a part of your cost. I am a businessman. I purchase a raw material of 10 lakh rupees after paying a GST of 10%. 10 lakh plus GST of 10%. 10% रेट नहीं है GST का, बट सिंपल कैलकुलेशन के लिए. तो मैंने सप्लायर मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया कितने का, 10 लाख का. उसके ऊपर जीएसटी कितना है, 10 लाख के ऊपर 10% 1 लाख, 11 लाख, राइट. I paid to supplier 11 lakh. I pay 11 to supplier, but my cost of raw material is 10 lakh only, because that 1 lakh of GST which I have paid at the time of purchase, I can set it off against GST payable on sales. CA Foundation. Input tax credit. This is called as an input tax credit. It was in the CA Foundation only. इंटरमीडिएट में भी है, लॉ में, जीएसटी में. बेसिक कॉन्सेप्ट है. अकाउंटिंग के लिए क्या समझना आपको, मैंने 11 लाख पे किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कॉस्ट 11 लाख है यार, क्योंकि वो 11 में से 1 लाख मुझे वापस मिलने वाला है. कहां पर, सेल्स के ऊपर का जो भी जीएसटी है, विच आई विल कलेक्ट फ्रॉम माई कस्टमर ऑन सेल, वॉट एवर इज द जीएसटी, आई विल कलेक्ट इट फ्रॉम माई customer and I'll say to government, hey government, look here, tax payable on sales so and so, let's say 4 lakh rupees, less tax already paid by me at the time of purchase 1 lakh, therefore net tax payable 3 lakh. This 3 lakh I will pay. कुछ समझा क्या? 3 लाख मैं पे करूंगा, 4 में से 1 लाख माइनस किया मैंने. तो वैसा ही है यहां पर. रागा ने डिबेंचर खरीदा, उसका कॉस्ट 1180 नहीं है. क्यों? आउट ऑफ 1180, 35 रुपीज ही विल रिकवर फ्रॉम कंपनी ऑन व्हाट डेट, ऑन 30 जून, नॉट ऑन 15 जून. 15 जून रिकॉर्ड डेट है, बट पेमेंट उसको कब आएगा, इसलिए हमने बाइफरकेशन किया. ये कुछ समझा क्या? तो अभी ये क्या किया, रागा ने परचेस किया डिबेंचर, है ना. जर्नल एंट्रीज आई विल राइट, जर्नल डेट, ड्रॉ नहीं किया तो भी चलता है, डोंट वेस्ट टाइम. पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट. सीए एग्जाम्स में लाइंस ड्रॉ करने के लिए मार्क्स नहीं होते, एज लॉन्ग एज यू कैन राइट इट परफेक्टली. अगर आप नहीं लिख सकते परफेक्टली तो लाइंस ड्रॉ करते जाओ. इफ यू डू नॉट हैव अ हैबिट और कंट्रोल ओवर योर हैंड राइटिंग, इट गोज लाइक दिस ऑन दिस. प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो तुम्हारा जिम्मेदारी है. मतलब हैंड राइटिंग या लाइन ड्रॉ करना ये सिखाने के लिए इंटरमीडिएट नहीं है. लाइक आई फर्मली डज नॉट बिलीव दैट these are the things you should learn on your own, how to draw lines and all of that stuff. 10th of June 2021. What entry should Raga pass? Okay, journal, whose books? We are talking about books of Raga. So in the books of Raga, I will say investment in debentures of so and so limited. We don't know the name of the company. It's just hypothetical that I taken. NHI I had shown you just to understand. So investment account debit. Investment in, you can give the name of the account like anything that you want. I am giving investment account debit. How much? 1180? Answer to that is no. Investment account cannot be debited by 1180. क्यों? Is my investment worth 1180? No. I paid 1180, but my cost of investment is not 1180. Moral of the story is what? What you pay is not necessarily your cost. What you pay is not necessarily your cost.
your cost may be lesser than that. So how much is my cost? 1144.72. ठीक है, अब मैंने इंटरेस्ट पे किया, सो आई डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा वर्ड है, और यू कैन से जस्ट इंटरेस्ट or interest earned account, interest received account, anything you can give. 35.28 to bank account, payment हो गया इसलिए 1180, like what you did in the 11th standard, machinery account debit to bank account, asset purchased. Oh, being asset purchased. Sorry हाँ, वो narration में being लिखना होता है. क्यों, क्या वैल्यू है उसका? कुछ भी वैल्यू नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं, बट अपने बुकिश लोगों ने चालू किए बिंग बिंग लिखते जाओ, उसका मार्क्स रहता है, नरेशन के मार्क्स रहते हैं. जोक नहीं कर रहा हूं, ये सीरियस है. नरेशन हैज मार्क्स इन सीए एग्जाम. सो 1180 तुमने पे किया, ठीक है, ये सिंपल एंट्री होगी. अब क्या होगा? डिबेंचर परचेस हो गए. आई अंडरस्टूड दैट द प्राइस दैट आई पेड वाज कंप्राइजिंग ऑफ टू पार्ट्स. नाउ द रियल थिंग इज to know what happens on 15th of June or what happens on 16th June morning. Sir, we have breakfast or tea. Other than that, can you tell me what will happen on 16th June morning if you have brain? 16th June morning, what will happen? Price will fall. No, you are partially right. It needs to be refined. Absolutely wrong. You can try once more. Bank account debit to interest account? Raga will get interest. नहीं रे लविश, Raga will receive interest on 30 June. 15 जून को कुछ होता नहीं है. 15 जून को रिकॉर्ड डेट है. पेमेंट कब होने वाला है? 30 जून. मैंने पूछा क्या 16 जून को क्या होगा? Assuming settlement happens on the same day, like आज आप परचेस किया तो आज के आज ये ट्रांजैक्शन होता है. Let me explain, you will not understand. What you said initially was right, but there is one very important word which is missing. What you said is normally a normal teacher, BCom teacher will say yes, or a normal professor will say yes in CA course also. Many. The one word that you missed, his initial answer was on 16 June price will fall. Correct. Half. Now look at my answer. On 16 June morning, ceteris paribus, price will fall. नहीं, बहुत बड़ा assumption है. If you understand ceteris paribus, assuming all other things are constant, the price will fall to the extent of accrued interest. Because on 16 June morning, accrued interest will not be there. Assuming X interest price remains same, that is why I said ceteris paribus. I hope you know ceteris paribus. Thank you. Assuming all other things being constant, the price of a debenture on 16th of June will fall down, equal to what? Equal to accrued interest. क्यों यार? इमेजिन करो 16 जून को सुबह अगर किसी ने डिबेंचर खरीद लिया तो उसको 6 महीने का इंटरेस्ट मिलने वाला है क्या? नहीं, he is not going to get the interest. क्यों? Record date is already over. Record date is already over. If a record date is already over, the price of debenture will be just price of debenture will be just X interest price, which is nothing but what? True value of debenture. है ना? What was the X interest price at which Raga purchased the debenture? 1144. तो 16 जून को प्राइस सुबह 1144 ही रहना चाहिए. अज्यूमिंग एक्स इंटरेस्ट प्राइस चेंज होता नहीं है. रियल, ये अजम्पशन बुलशिट है. क्यों? रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है जो चेंज होती रहती है.
Like today the prices of majority of the debentures worldwide have collapsed because of Russia's invasion of Ukraine. Russia has invaded Ukraine. Russian index was down by 6% about half an hour ago. So I don't, right, it will collapse substantially. Now it's up again. Maybe Russia could have announced something different. Putin's girlfriend might have told him something different. So it is madness that is going on right now. Today Russia, there are multiple news. Some news says that Russia will go, US wants a war somehow. They are so desperate to have a war. They have not had a war for a very long. So US wants a war, so US keeps on saying that no, Russia is going to attack Ukraine like anything. Our Indian media also want something like that to happen. कोई तो मसाला चाहिए उनको अभी, नया मसाला चाहिए. God knows, but today, due to the risk going up, the prices of the bonds, equities, everything is hammered down substantially. तो एक रियलिटी में एक्स इंटरेस्ट प्राइस कभी भी सेम नहीं रहता. लेकिन एग्जाम के लिए मैंने बोला अगर सब चीजें सेम रही तो 16 जून को ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या रहेगा बच्चों? आई कांट हियर. 16 जून को ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस 1144 ही रहेगा, लेकिन ये अक्रूड इंटरेस्ट 16 जून को जीरो हो जाएगा. व्हाई इट विल बिकम जीरो? बिकॉज रिकॉर्डेड हो गया ना. देन 16 जून होने के बाद इंटरेस्ट विल अगेन स्टार्ट अक्रूइंग आफ्टर 30 जून. बिटवीन 15 जून टू 30 जून इंटरेस्ट डज नॉट गेट अक्रूड. क्यों? क्योंकि 30 जून तक का जो इंटरेस्ट है वो पिछले वाले बंदे को ही मिलने वाला है. ठीक है, अब सोचो, ऑब्जर्व करो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर. सर रागा ने डिबेंचर कब बेचे रही है? When did Raga sold his debentures? Raga sold a debenture on what date? 17 June. Common sense tells me on 17 June also the price would have fallen down. Why price would have fallen down? Price would have fallen down because of a simple reason. Reason is very simple. Accrued interest वाला जो element है वो क्या हो गया है? Zero हो गया accrued interest वाला element. If accrued interest element is zero, let us say Raga sells a debenture at 1135. क्यों 1135? अज्यूम करो कि प्राइस एक्स इंटरेस्ट प्राइस भी क्या हो गया? चेंज हो गया. अज्यूम करो 2 मिनट के लिए, और मैं आपको अभी इसमें से मैजिक सिखाता हूं. सो कम डाउन टू द एंट्री. 17th of June 2021 रागा ने डिबेंचर बेच दिए. कितने में बेच दिए उसने डिबेंचर? 1135. 1135 में पूरा का पूरा एक्स इंटरेस्ट ही है, अक्रूड इंटरेस्ट है ही नहीं. व्हाई देयर इज नो अक्रूड इंटरेस्ट? बिकॉज रिकॉर्ड डेट इज ऑलरेडी over. If you buy debenture on 17th of June, will you get a interest for the period Jan to June? No. Jan to June का interest किसको मिलने वाला है? अरे किसको मिलने वाला है? The one who was the owner of debenture on what date? Record date, which is already. अब Raga is now seller, right? He sells it. So what should the entry? Bank account debit. Bank account debit. Debit for what? Amount received, ना? How much? 1135. इंटरेस्ट इसमें कुछ है क्या 1135 के अंदर? देयर इज नो इंटरेस्ट एट ऑल. टू व्हाट अकाउंट? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, लाइक मशीनरी सोल्ड. 1135. 1135 बैंक अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. पूरा का पूरा एक्स इंटरेस्ट ही है, उसमें अक्रूड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है. देयर इज नो अक्रूड इंटरेस्ट. Now, what is the magic? I don't know how many ever realize the magic. Raga has booked the loss. Raga has booked the loss. How? He says that I purchased the investment at 1144 and now I have sold the investment at 1135. Do you understand? Raga says I have bought a debenture at 1145 and I have sold them at what? 1135. I booked a loss of 9 rupees per debenture. This loss he uses to set off his tax liabilities, because loss could be set off against profits. रागा को दूसरी जगह, अब सच में रागा को लॉस हुआ है क्या? नहीं. क्यों नहीं हुआ है? 30 जून को और एक चीज होने वाला है.
इंटरेस्ट मिलने वाला है 30 जून को। तो सच में पूछो तो राघा को लॉस नहीं हुआ है। 2 मिनट रुकना, 2 मिनट रुकना। 17 जून को लॉस बुक किया मैंने। कितने का लॉस बुक किया रे? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लाइक मशीनरी रे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन की जगह पे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाउ मच लॉस हैव यू बुक्ड? कांट हियर। 9.72 ना रे, 9.72 public to investment account 9.72. Raga shows that he has booked the loss, and on 30 June Raga will still get the interest. Even if he is not a debenture holder on 30 June, he will get the interest because record date he was a debenture holder. How much interest he will get? Okay. Oh, by the way, CA कोर्स में ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है। सीए कोर्स में अभी तक मैंने रिकॉर्ड डेट और इंटरेस्ट पेमेंट डेट कभी अलग होता है ऐसा देखा ही नहीं। क्यों? आईसीए को जाके पूछो ना, मेरे को क्यों पूछ रहे? उन्होंने नहीं पूछा, उनका इंटेलिजेंस लेवल है। मेरा इंटेलिजेंस लेवल मैं क्यों आपको कम करूं ना उसकी वजह से। लेट मी टीच। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट मिलेगा रागा को? पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। रागा विल रिसीव द इंटरेस्ट ऑफ द होल 6 months। कितना था? 1000 इंटू 8%। नाउ यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज और यू कैन डू 6/12। समझा गया? नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं हम। आई थिंक अप टू 10 जून वी आर ऑलरेडी कैलकुलेटेड 161 प्लस 20 डेज ऐड करो 181। आई होप यू अंडरस्टैंड 6 months इज 181 डेज। अरे डिवाइडेड बाय 365 बोलो 39.67। ये इंटरेस्ट रागा को मिला है ना? रागा ने लॉस भी बुक किए। अब बच्चों यहां पर तो रियली चलो प्राइस हैज गॉन डाउन फ्रॉम 1144 टू व्हाट? 1135। द रियलिटी में प्राइस हैज गॉन डाउन। रियलिटी में प्राइस हैज गॉन डाउन। अब सोचो क्या होता है इससे। ये लॉस मैंने बुक्स में क्रिएट किया, लेकिन इंटरेस्ट तो मुझे 39 रुपीज का मिला है। एम आई राइट? लेकिन मैंने परचेस करते टाइम पे इंटरेस्ट 35 का पे भी किया था। इंटरेस्ट 35 का पे भी किया था ना इंटरेस्ट मैंने। तो मुझे सच में इंटरेस्ट कितना मिला है? फाइंड आउट द इंटरेस्ट। 4.39 रुपीज का इंटरेस्ट इज व्हाट आई हैव अर्नड। 4.39 रुपीज। बेसिकली 10 जून से 30 जून का इंटरेस्ट पूरा का पूरा मुझे मिल गया। वो तुम्हारा 20 दिन का इंटरेस्ट रहेगा। टेका नहीं कैलकुलेटर ऑब्वियसली रहेगा ना यार, डिफरेंस है दोनों का। इंटरेस्ट ऑफ 20 days comes to whose pocket? Raga's pocket. Now listen up, just wait. Interest of 20 days, देखो उसके पहले बच्चों का डाउट पूछना चालू हो गया। सर डिबेंचर को शॉर्ट कर सकते हैं क्या? मैंने आपको कल ही क्या बोला था? वट एवर डाउट यू वांट टू आस्क, आई विल से एनीवन हैज अ डाउट, एट दैट टाइम यू हैव टू आस्क अ डाउट। तो मानव जी इसके आगे अगर आपने बीच में टोकने की कोशिश की तो आप मानव नहीं रहोगे, आप आदि मानव बन जाओगे। मैं डाउट आंसर करूंगा ना, बट 2 मिनट लेट मी फिनिश। डिड यू ऑब्जर्व? ट्रूली स्पीकिंग रागा के 30 जून को ही ट्रांसफर्स इंटरेस्ट टू P&L। व्हाट इज द बैलेंस इन इंटरेस्ट अकाउंट? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। टेल मी द बैलेंस। 4.39 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4.39। अब बोलेंगे सर कहां से 4.39 किया? डिफरेंस ना, 3967 एंड 3528 का डिफरेंस इज 4.39। That 4.39 I had transferred to P&L as my income, and I had debited my P&L by 9.72। तो यहां पे तो रियल लॉस हुआ, बट बहुत सारे केसेस में क्या करते लोग? The reason why I had shown you NHAI was that NHAI में अगर आपने ऑब्जर्व किया, इंटरेस्ट इज टैक्स फ्री। देखा क्या आपने NHAI का डिबेंचर? क्या लिखा था उधर? डिड यू सॉ? टैक्स फ्री।
सीए कर रहे हो, कुछ दिमाग चलना चाहिए। अगर मैंने इंटरेस्ट सच में रिसीव किया और उस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन मैंने अगर परचेस प्राइस और सेल प्राइस का जो डिफरेंस है उसको लॉस करके दिखाया मैंने, आई कैन सेव टैक्सेस इन अ बिग वे। व्हाई? लेट मी टेल यू द गिमिक। ये जो बाइफर्केशन किया ना मैंने अभी ऑफ 1180 बिटवीन एक्स इंटरेस्ट एंड व्हाट? अक्रूड इंटरेस्ट, this bifurcation is irrelevant for income tax law. इनकम टैक्स लॉ बोलता है ऐसे प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करते हैं। इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से क्या होगा मालूम है तुमको? ये अकाउंटिंग के हिसाब से सच में हुआ। इनकम टैक्स लॉ में क्या होता है दिखाता हूं। इनकम टैक्स लॉ बोलता है सिंपल, कितना पैसा आओ 6, कितना पैसा जाओ 6। कितना पैसा तुम्हारा आ गया है, सेल करके कितना आया, सेल प्राइस कितना था तुम्हारा? 1135, हाँ ना। परचेस प्राइस, ये बाइफर्केशन करने का नहीं, परचेस करने पे तुमने कितना पे किया? 1180 पे किया ना। इनकम टैक्स लॉ बोलता है तुम्हारा लॉस है 45 का, और तुमको जो इंटरेस्ट मिला, कितने का इंटरेस्ट मिला रे तुमको? 39.67 का इंटरेस्ट मिला ना तुमको। ये इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, ये इंटरेस्ट टैक्स फ्री। अरे मारवाड़ी दिमाग चाहिए। मैंने इधर लॉस बुक किया और इधर मैंने इंटरेस्ट दिखाया। नेट में मुझे लॉस हुआ है, लेकिन आई विल क्लेम लॉस क्यों हुआ नेट में? बिकॉज आई हैड शोन द प्राइस टू बी लोअर। एक काम करता हूं तुम्हारे समझने के लिए ना, मैं ये प्राइस को 1135 की जगह पे, जस्ट यू डोंट राइट, आई विल जस्ट शो यू, डोंट राइट दैट प्राइस। आई विल कीप दिस प्राइस टू बी 1144.72. I'll keep it same, you don't change it. तो यहां पर वो 1172 आएगा, हाँ ना। यहां पर आपका लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? 0 आएगा ना। अरे हाँ है ना। तो इनकम टैक्स में भी क्या हो जाएगा? ये 1135 के जगह पे कितना हो जाएगा? 11.72 को तुमने सेल किया, परचेस किया था 1180 को, डिफरेंस 35.28 का तुमने लॉस दिखाया अंडर इनकम टैक्स लॉ। और जो इंटरेस्ट तुमको मिला वो तुमने टैक्स फ्री दिखाया। इंटरेस्ट इज अ टैक्स फ्री, बट द डिफरेंस बिटवीन द परचेस प्राइस एंड सेल प्राइस इज माई लॉस, बिकॉज सेल प्राइस इज लोअर देन द परचेस प्राइस। अब ये लॉस अगर आपने दिखाया, लॉस का होता क्या है? लॉस के साथ लॉस इज सेट ऑफ अगेंस्ट योर प्रॉफिट। ये नहीं समझा? लॉस इज सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट। तो मेरा प्रॉफिट था, लेट्स से ऐसे 1 लाख का मैंने लॉस बुक किया और मेरा प्रॉफिट था 4 लाख। मैं 4 लाख के ऊपर टैक्स, सच में मुझे लॉस नहीं हुआ है। क्यों? सच में यहां पे लॉस है 35 का और यहां पे इंटरेस्ट मिला है मुझे 39.67। तो आई हैव गॉट रियल प्रॉफिट दैट आई हैव गॉट इज ऑफ 4.39। अगर आप यहां पे जर्नल एंट्रीज करके देखोगे तो भी 4.39 ही आएगा एट दैट प्राइस। तुमको चेंज करके दूंगी एंट्रीज। 1144.72 लिखो, चलो चेंज करो प्राइस। उधर जो लिखा था तुमने चेंज करो। तुम लोगों को, तुम्हारा ब्रेन है ना, उसके बिना नहीं चलेगा। 1144.72 को बेच दिया तुमने। ऐसे तो झोलझाल करते हैं बच्चों। अब सेल प्राइस का एंट्री भी चेंज करो। सेकंड एंट्री जो है ना, सेल कितने पे किया तुमने? 1144.72। लेट अस अज्यूम दैट एक्स इंटरेस्ट प्राइस डिड नॉट चेंज। अज्यूम एक्स इंटरेस्ट प्राइस डिड नॉट चेंज, बट प्राइस कम क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि अक्रूड इंटरेस्ट अभी है नहीं ना 17 जून को। तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों तुमको? 0 हो जाएगा ना ये। दिस एंट्री, आपको एंट्री नहीं चेंज करना है, आपको सिर्फ अमाउंट को क्रॉस करना है और नया अमाउंट लिखना है। 0 हो गया ना लॉस। क्यों? परचेस प्राइस पे बेच दिया मैंने सच में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट विच गोज टू P&L 4.39। तो सच में आपने 4.39 कमाया है। तो आपने 4.39 पे टैक्स भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? भरना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं रियल लाइफ में। दैट इज वेयर द गिमिक इज, दैट्स वेयर द पीपल लव डेट। क्या किया मैंने?
मैंने सच में 4.39 कमाया, लेकिन टैक्स भरते टाइम पे मैं बोलता हूं इंटरेस्ट इज 39.67 और लॉस इज 35.28। ऐसे बहुत सारे लोग झोलझाल करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को पकड़ने के लिए इनकम टैक्स में कुछ सेक्शंस है ऐसा, दीज आर द लूप होल्स। टैक्स फ्री बॉन्ड्स के ऊपर आप ये करोगे तो इनकम टैक्स लॉ में ये बाइफर्केशन नहीं करना पड़ता आपको। भाई इनकम टैक्स लॉ बोलता है प्रॉफिट क्या है, सिंपल, सेल प्राइस माइनस परचेस प्राइस इज अ प्रॉफिट। नाउ इफ सेल प्राइस इज बिलो द परचेस प्राइस इट इज लॉस, और इंटरेस्ट शुड बी चार्ज सेपरेटली। व्हाई? once you start learning income tax law you will come to know there are heads of income. There is a head of income called as a capital gain. This goes under the head capital gain, short term capital gain बोलते हैं उसको. This goes under the another head IOS, income from other sources. उसका हेड ही अलग है इनकम टैक्स लॉ के अंदर। तो लोग क्या करते हैं, तुम्हारा जो बाकी का कैपिटल गेन हुआ है जिससे तुमको प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट के अगेंस्ट ये लॉस क्या कर लेते हैं, सेट ऑफ कर लेते हैं। प्रॉफिट के अगेंस्ट लॉस सेट ऑफ हो गया तो मतलब प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स तुम भरने वाले थे वो नहीं भरा तुमने। अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है। अकाउंटिंग में हम ट्रू प्रॉफिट दिखाते हैं। ट्रू प्रॉफिट क्या है तुमको, 4.39। हैव आई शोन 4.39? यस, आई हैव शोन 4.39। द एंटायर कॉन्सेप्ट आई एक्सप्लेन्ड। कुछ समझा है क्या तुमको? आप बोलेंगे सर फिर ये बहुत अच्छा है ना सर, हम करेंगे ना सर। इनकम भी चाहिए तुमको उसके लिए। ओके, आज नहीं, ये कहीं ना कहीं तो फ्यूचर में आएगा। फ्यूचर में आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो फॉर अ कंपनी और समथिंग, प्रोवाइडेड you meet the criteria of section 94 subsection 7. There is a section 94 subsection 7 of income tax law. उसमें आप ये डिबेंचर कब परचेस कर रहे हो और कब सेल कर रहे हो उसके लिए एक टाइम लिमिट लिखा है इनकम टैक्स लॉ में, वट एवर इट इज, आई डोंट नो। दैट टाइम लिमिट के अंदर आपने अगर ट्रांजैक्शन किया, यू कैन डू लाइक दिस। आप बोलोगे ये तो बहुत अच्छा है ना सर, लेकिन रिस्क भी है आपके पास। क्या रिस्क है? अभी मैंने ये क्वेश्चन में मैंने अज्यूम किया कि जब आप डिबेंचर बेचने गए प्राइस रिमेन्ड सेम, दैट इज व्हाई आई सेड हिज आंसर वाज हाफ ट्रूथ और हाफ करेक्ट आंसर। मैंने क्या बोला, सेटरिस पैरिबस, बट रियलिटी में थिंग्स रिमेन सेम ओवर 10 days? नो, प्राइस कुड अंडरगो अ चेंज। सो दैट इज व्हाई सम पीपल टेक अ बेनिफिट ऑफ दिस। अब इसका बेनिफिट आप इक्विटी में बहुत अच्छे से ले सकते हो। ये तो थोड़ा रिस्की वाला सिचुएशन था। डिविडेंड नहीं होता बेटा, डिविडेंड नहीं होता। डिविडेंड के लिए कुछ चीजें चेंज हो चुकी है। सेक्शन नंबर 115 हैज बीन अबॉलिश्ड बाय निर्मला सीतारामन। देयर इज अ सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 34 which was introduced by यशवंत सिन्हा, which has been now abolished, which was exempting the capital gain. चेंज हो चुका है कुछ। What I'm talking about is something called the बोनस शेयर्स करके कंसेप्ट होता है। बीसी श्रीनिवासा शेट्टी करके एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो अप्लाई करना होता है इनकम टैक्स लॉ के अंदर। सेक्शन 54 होता है उसके लिए, है कुछ अलग है। मैंने कल ही बोला था आपको, ये इक्विटी मैंने आपको इन्फोसिस का, मैंने आपको बोला ना, मैंने घर खरीदने के लिए मैंने 14-15 लाख रुपए, 25-30 लाख रुपया टोटल सेव किया था। आई विल शो यू वर्किंग्स आल्सो, हैव पेशेंस। इक्विटी में थोड़ा सा एक केस में इजी जाता है, दैट इज बोनस शेयर्स। डिबेंचर के केस में भी ये हो सकता है, प्रोवाइडेड यू मीट सर्टन एडिशनल कंडीशंस। आई कांट एक्सप्लेन देम बिकॉज यू डोंट नो द इनकम टैक्स लॉ राइट नाउ। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, अकाउंटिंग में हमें ट्रू कॉस्ट या ट्रू प्राइस देखना पड़ेगा। व्हेन यू परचेस अ डिबेंचर, व्हाट इज अ ट्रू price that you pay for debenture, and when you sell a debenture, what is the true amount that you get for debenture? The amount that you get is including interest. उसमें से interest हटा दो, बाकी का जो अमाउंट है वो किसके लिए बचेगा? Remaining amount is for who? What? For debentures. So entries हो गया तुम्हारे, entries लिखे तुमने ये, that's it, entries खत्म हो गए और कुछ है नहीं। Now concept that I introduced here is कम इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? बोलो, एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस व्हाट? अक्रूड इंटरेस्ट। ये अक्रूड इंटरेस्ट कब से कब तक होता है बच्चों?
from last interest payment date, last interest payment date to what? To the date of transaction. Purchase, instead of purchase you say a transaction, na? Because it is a purchase for buyer but it is a sell for seller, so that's why we say transaction. In CA exams record date is not given, so payment date itself is a record date. जिस दिन पेमेंट हो रहा है उसी दिन पे रिकॉर्ड डेट है. अब 30 जून को सब कुछ हो जाता है. नाउ इफ यू वांट टू हैव डाउट्स आई कैन आंसर. ओके, वहां पर एक डाउट आ चुका है. सर व्हाई द प्राइस वेंट डाउन आफ्टर 15? प्राइस वेंट डाउन आफ्टर 15 बिकॉज आफ्टर 15th of June accrued interest is zero ना. इमेजिन करो 16 जून मॉर्निंग यू बाय डिबेंचर. 16 जून मॉर्निंग यू बाय डिबेंचर, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ इंटरेस्ट फॉर द 6 months पीरियड. क्यों? कंपनी ने क्या बोला था? इंटरेस्ट फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ 6 months विल बी गिवन टू अ पर्सन who owns a debentures on record date. That's a true concept ना. तो लिखो नीचे concepts, fundas लिखो. Number 1, after record date price of debentures falls immediately. After record date price of debenture into bracket cum interest price of debenture into bracket cum interest price falls immediately because accrued interest becomes zero. Accrued interest becomes zero. Funda number 2. In examination, record date and payment date are same. In examination, record date and payment date are same. Number 3. Under income tax law, bifurcation of cum interest price is not required. Under income tax law, bifurcation of cum interest price is not required. Bifurcation of cum interest price is not required. नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं ना बाइफर्केशन का वहां पर. There is no concept of bifurcation of a cum interest price. नहीं दिया लॉ में लिखा है. It's okay. So what is the doubt? Sir, similarly after payment of dividend price falls. Why price falls? Yes, same logic goes for dividend also. ये जो in case of dividend also there is a record date. I'm going to talk about that. आगे जाके equity instruments है ना. Right now we are discussing डेट. इक्विटी में भी यही होता है. रिकॉर्ड डेट होने के बाद प्राइस नीचे जाता है. देखने का तुमको ये क्या करेंगे अभी हम? देखो स्टॉक एक्सचेंज पे जाने का एंड अभी ये एनएससी का हिस्टोरिकल डेटा लेट मी चेक. इसका आईएसआईएन नंबर है ना. ऑल हिस्टोरिकल डेटा में गया मैं. देखो आई वेंट टू एनएचआई बॉन्ड ओनली. आई वेंट टू व्हाट? ऑल हिस्टोरिकल डेटा. लेट अस सी लास्ट 1 year. 1 year का डेटा दे रहे हो. लिखा तो है ऑल हिस्टोरिकल. सो ये सब स्क्रिप्ट्स का दिया. आई डोंट वांट ऑल द स्क्रिप्ट्स. आई वांट इट ओनली फॉर व्हाट वाज दैट सीरीज. एन क्या था वो? N2 था ना. सिलेक्ट ऑल, डीसिलेक्ट ऑल, N2. आई एम चेकिंग द डेटा फॉर द लास्ट 1 year. आई जस्ट शो यू. ओपन हाई देखने दो. N2 का रिकॉर्ड डेट मालूम नहीं है अपने को. हाँ देखो मिल रहा है यहां पर. चेक करो.
ऑब्जर्व, N2 का मैंने डेटा डाउनलोड किया, अभी इसका डेटा का लेट मी जस्ट ट्राई टू टेक इट इन एक्सेल इफ पॉसिबल। मेरे इसमें एक्सेल है लेकिन तभी भी उस इनको समझता नहीं है। डाउनलोड्स में क्या गई, दिस डजंट गो टू डाउनलोड्स ओनली, हाउ डू सेव का भी ऑप्शन नहीं देता है। ओके, नाउ इमेजिन, जस्ट कॉलम इमेजिन करो आप, ओपन प्राइस है, फर्स्ट कॉलम इज व्हाट, ओपन प्राइस, नेक्स्ट कॉलम इज हाई प्राइस लो प्राइस। आप जस्ट ओपन का कॉलम देखना और आगे जाके प्रीवियस क्लोज है। सो 1 2 3, फोर्थ कॉलम इज अ प्रीवियस क्लोज एंड द फर्स्ट कॉलम इज व्हाट, ओपन। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड इन September 2021. What happened in September 2021? You wanna see? You wanna go mad? Can you see? Can you see here? Can you spot? Can you spot? 15 September क्लोजिंग प्राइस देखो कितना था। अरे दिख रहा है क्या तुमको चौथा कॉलम? आई कांट शो, 1 2 3 4, दिस इज अ क्लोजिंग प्राइस ऑफ व्हाट डेट, 15th of September. What is the closing price of 15th September? 1 to 16 September ओपनिंग प्राइस चेक करो, 1200 ऑलमोस्ट और 1198, मतलब 80 रुपए से प्राइस गिर गया ऑलमोस्ट। ऐसा क्या हुआ? 15 सितंबर रिकॉर्ड डेट रहेगा, इसलिए 16 सितंबर को सुबह प्राइस कम हुआ, क्योंकि 15 सितंबर को जिस किसी ने डिबेंचर खरीदा उसको इंटरेस्ट मिल गया, लेकिन 16 सितंबर को अगर किसी ने खरीदा तो उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई 16 सितंबर का ओपनिंग प्राइस इज गॉन डाउन टू व्हाट, 1198। देन धीरे धीरे वो अक्रूड इंटरेस्ट बढ़ते रहता है। सी, इन रियलिटी एक्स इंटरेस्ट प्राइस ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग एंड द अक्रूड इंटरेस्ट ऑल्सो कीप्स ऑन changing. Accrued interest keeps on rising as the days pass. Accrued interest always keeps on rising, and this X interest can go anywhere. It's like a drunken man. X interest can go up, X interest price can go, anything can happen. Do you understand that? I can't hear. Good. तो क्या हुआ ये 16 सितंबर को बच्चों प्राइस कम हुआ कि नहीं हुआ? क्यों कम हुआ? क्योंकि 15 सितंबर रिकॉर्ड डेट रहेगा। अभी ये रिकॉर्ड डेट है, ये कहां से चेक करने का? ये चेक करने का तरीका जो है ना बहुत मुश्किल है। उसका ISIN नंबर देख के ढूंढ के दिखा तो आपको, रिकॉर्ड डेट आपका मिलना चाहिए इसका, मिलता ही नहीं है आसानी से। दिस रिकॉर्ड डेट गॉड ओनली REC पे आ गया ना, NHAI ईडलवाइस की वेबसाइट पे मिलता है कभी कभी। लेट मी शो यू। आई गो टू ईडलवाइस वेबसाइट, आई सर्च नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसमें N2 दिख रहा है किधर तुमको? N2 देखो, हाँ N2 दिख रहा है, उसका रिकॉर्ड डेट दिखेगा तुमको होपफुली। लेट इट लोड। लोड नहीं हो रहा है यार। NHAI के वेबसाइट नहीं, NHAI के वेबसाइट पे तो मेरे को उम्मीद ही नहीं है। NHAI N2 डेटा NSE के वेबसाइट पे है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस। NHAI का वेबसाइट पे तो मिलना मुश्किल है। एक सेकंड, और एक तरीका रहता है, उसका ISIN सर्च कर सकते हो आप। इफ यू वांट ओनली आई जस्ट शो यू, रिकॉर्ड डेट परफेक्टली वही रहेगा। सीरीज क्या है? N2। Let me search ISIN number. Where is that ISIN number? अच्छा इधर है। Let me copy and let me paste. Issue details for this. देखो मिल गया, देखो perfect. Every October they are paying the interest. कूपन फ्रीक्वेंसी एवरी अक्टूबर दे आर पेइंग इंटरेस्ट। अक्टूबर पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो गए
तो लिस्ट बनाने के लिए कुछ तो टाइम लगता होगा ना उनको। अरे तो लिस्ट कब से बनाने चालू किया? 15 सितंबर। तो 15 सितंबर का उनका रिकॉर्ड डेट रहेगा। यहां पे रिकॉर्ड डेट उसने लिखा ही नहीं, देखो बेवड़ा, रिकॉर्ड डेट उसने ब्लैंक रखा है। मैं नहीं कर सकता कुछ इसके आगे, और कुछ नहीं सर्च करके दिखा सकता तुमको। और तुमको ये नहीं समझे तो छोड़ दो ना। क्यों? ये बिना समझे तुम पास हो सकते हो। Without knowing these concepts, you can pass, you can become a CA. And then if somebody says, how do you do bond stripping? What I explained to you was bond stripping or interest stripping. क्या किया मैंने क्या किया था? लॉस बुक किया था इनकम टैक्स के लिए, और अकाउंटिंग में मैंने प्रॉफिट दिखाया था। अगर आपको मालूम है, धीरूभाई अंबानी यही तो करते थे। धीरूभाई अंबानी की वजह से इंडिया में एक सेक्शन आ चुका है, इन केस यू नो हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, मैट, minimum alternate tax. It was the greatness of Dhirubhai Ambani or consultants of Dhirubhai Ambani, whatever it could be. But the mistake of Dhirubhai Ambani also, in one of the general meeting of Reliance, he claimed, it was I think at a Wankhede or Brabourne stadium, Dhirubhai Ambani said, your company has earned a wonderful profits and will be paying a dividend like this, like every year, but we have managed to pay very less taxes by complying the law. And there was an income tax commissioner who was sitting there. He said, how the hell this fellow is earning profit, paying dividend, and tax कम हो रहा है, या टैक्स ज्यादा पे नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है? तो इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करने का समझ में आया कुछ जोलजल तो है नहीं. He has used the income tax law cleverly to ensure that the situations where you don't have the profit in income tax law or you set up the losses under income tax law, but reality में accounts में profit है. What I explained to you was that situation. And that is where the income tax law introduced a new section at that point of time, minimum alternate tax, whereby income tax law said, after applying the provisions of income tax law, if the tax goes below certain percentage of profit as per P&L, P&L के हिसाब से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसका कुछ परसेंटेज निकालेंगे, उसके नीचे आपका टैक्स पेएबल जा रहा है, you should ignore entire income tax law and pay the tax as per P&L. That's the only section where tax is to be paid as per accounting profits. Otherwise, tax is to be paid as per what? Taxable income calculated under income tax law. However, genius of Dhirubhai Ambani or the Indian creativity, like I showed you right now, I can create like this by complying the sections of the income tax law. Loss book कर दो, because income tax law की एक bifurcation नहीं है उधर. अकाउंटिंग में है बाइफर्केशन. अकाउंटिंग में ट्रू सब्सटेंस आपको समझना है ट्रांजैक्शन का, जाने दो. सो दैट इज व्हाई द प्राइस फॉल्स. व्हाट यू नीड, कॉन्सेप्ट दैट आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस वाज, आफ्टर रिकॉर्ड डेट प्राइस falls, like I had shown you for NHI, and due to that fall in the price, people can take a heavy advantage of saving taxes. ये ऐसा डिविडेंड की वजह से भी होता है, ये ऐसा बोनस शेयर्स की वजह से भी होता है. लेकिन डिविडेंड के ऊपर अभी पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल हो गया, बिकॉज डिविडेंड्स आर नाउ टैक्सेबल. अर्लियर दिस यूज्ड टू हैपन. वट एवर यू वर सेइंग ना भाई साहब, दैट वाज पॉसिबल बिकॉज अर्लियर डिविडेंड वाज टैक्स फ्री इन द हैंड्स ऑफ shareholder, which has now changed. There's a section 1150 of income tax law which is now abolished. Under that section, dividends, tax on the dividend was paid by the company itself, called as a dividend distribution tax, which is not there as on today in India. Nirmala madam abolished it, and dividends were tax free in the hands of investor. तब ये possible था. तू जो बोल रहा है ना, ये मैंने क्यों दिखाया एनएचआई? मैं पागल नहीं था एनएचआई दिखाने के लिए. मेरा पर्पस था एनएचआई का इंटरेस्ट शुड बी टैक्स फ्री, तभी जाके वो हो सकता है ना. अगर इंटरेस्ट टैक्सेबल है और ये लॉस का आप सेट ऑफ करते हो, क्या फायदा, क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं होता, वही होता है. मेरे को क्या चाहिए? इंटरेस्ट शुड बी एग्जम्प्टेड एंड प्रॉफिट लॉस शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग सेट ऑफ. ये डिविडेंड के साथ होता था, बिकॉज डिविडेंड वाज आल्सो एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स अर्लियर. गवर्नमेंट को समझ में आया, गवर्नमेंट ने डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगा दिया इन्वेस्टर्स के हाथ में.
छोड़ दो, क्यों एक्सप्लेन किया ऐसा ही लग रहा है तुम लोगों को ना, ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें एक्सप्लेन भी नहीं करनी चाहिए। ये चीज हमको समझने के लिए 6-7 साल गए थे सीए होने के बाद, ऐसा कुछ होता है। कम डाउन टू द कॉन्सेप्ट। सो लेट मी ब्रिंग अप द कॉन्सेप्ट बुक फॉर यू। ये जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की सब कुछ कॉन्सेप्ट बुक में लिखी रहेगी। पेज नंबर आई डोंट नो, लेट मी जस्ट पुल इट ऑफ। कॉन्सेप्ट बुक खोलना बच्चों। चैप्टर नंबर है आपका, चैप्टर नंबर क्या है? B1। B1 is a chapter. So look at it. इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ये AS13 के जो रूल्स है वो मैं आपको बाद में सिखाने वाला, पूरे अभी तक नहीं सिखाया। आई जस्ट एक्सप्लेन यू डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट यस्टरडे। पीरियोडिक इनकम कमा सकते हो और यू कैन मेक ए इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन। असेट क्लासेस डिड आई एक्सप्लेन? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वगैरह ये एक्सप्लेन नहीं किया, वो करने वाला हो। इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिड आई एक्सप्लेन? एक्सक्लूजन फ्रॉम AS13 वो नहीं एक्सप्लेन किया, आगे का ये भी एक्सप्लेन नहीं किया। आई डायरेक्टली केम डाउन टू व्हाट? अकाउंटिंग फॉर डेट इंस्ट्रूमेंट्स। डेट इंस्ट्रूमेंट के बेसिक टर्म, फिक्स रेट डिड आई, फेस वैल्यू डिड आई एक्सप्लेन? कूपन रेट, लाइबॉर क्या होता है? लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, इट इज अ बेंचमार्क। बहुत सारे लोन्स मैंने आपको कल बोला था घर पे देखने के लिए, कितने लोगों ने देखा रे? होम लोन्स आपके, आई आस्क योर पेरेंट्स, आई आस्क यू टू चेक, एनीवन चेक्ड? यस, चेक करे पर लोन नहीं है। फिर क्या चेक किया तूने? चेक किया पर लोन नहीं है। मैंने बोला था लोन का इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट हुआ है वो चेक करो। चेक किया पर लोन नहीं है, मतलब तुम लोगों के माँ बाप के पास लोन ही नहीं है, क्या पब्लिक है रे? लोन ही नहीं है, हाँ? ग्रेट। सो coupon payment frequency I taught, tenure of instrument, period, redemption rate, record date I taught. Now let us come down to the some more wonderful things. Debentures market में ट्रेड क्या प्राइस पे होते हैं? The price at which debentures are traded is cum interest price, right? That is called the true price plus accrued interest. But वो प्राइस आता कहां से है उसका मैंने यहां पर लॉजिक लिखा है। Those who have understood time value of money chapter which was in CA foundation mathematics will understand. If you don't understand, it's okay, not required for CA course or accounts at least. Price of debenture is a present value of future cash flows from the bond discounted at expected rate of return. ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तुमको आएगा। जिन्होंने ऑलरेडी FM किया है उनको समझा होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो आप पेंडिंग रखो, FM में आपको आएगा लाइन। प्राइस, व्हाई आर यू पेइंग अ प्राइस फॉर डिबेंचर टुडे? कॉमन सेंस बोलता हूं, व्हाई आर यू पेइंग अ प्राइस टुडे? यू आर पेइंग टुडे बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन फ्यूचर। यू आर स्पेंडिंग ऑन CA कोर्स टुडे, व्हाई? अरे व्हाई आर यू पेइंग स्पेंडिंग ऑन CA कोर्स टुडे? Because you are expecting some salary in future, right? Imagine I say, Modi ji ने law बनाया है, there will be no salary to chartered accountants here in after. All chartered accountants have to work for nation at free of cost. Will you come to the class tomorrow? You will not, obviously, na? You are expecting something from the CA course, that's why you are spending. But how much you will earn, इसका गारंटी नहीं है। Why? You will become a CA itself is not guaranteed. Thereafter, how much will you earn? That is also not guaranteed. But bond के केस में तो गारंटी होता है। हाँ बोले सर कैसे गारंटी? कंपनी तो बोलता है कि हम आपको फिक्स रेट देंगे, हाँ बोलते लेकिन नहीं दिया तो सिक्योरिटी होती है ना। डिबेंचर्स आर secured. So in case of a debenture, I know what I am going to get in the future. So what you have to do? Jumping. ये क्या है? टाइमलाइन। दिस इज टाइम 0. 0 मीन्स टुडे।
this is year 1, year 2, year 3, year 4, year 5, year 6. Let's say debentures are having a tenure of 6 years. You invest something today for receiving something over the next 6 years. इधर आपको क्या मिलेगा? I1 मिलेगा, I2 मिलेगा, I3 मिलेगा. क्या है I? इंटरेस्ट. आपको हर साल का इंटरेस्ट मिलता रहेगा, प्लस लास्ट ईयर में आपको आरवी मिलेगा. आरवी. नाउ मैथ्स में आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते वो सीखा होगा मैथ्स के अंदर. क्या फॉर्मूला था रे? P इज इक्वल टू A इंटू 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन. और FM के अंदर मैंने आपको सिखाया होगा PV, याद है करे, इज इक्वल टू इंटू 1 प्लस R रेज टू N. इस चीज को हम क्या बोलते हैं? एन्युटी फैक्टर बोले कोई तो एन्युटी फैक्टर बोले ना. सो दिस इज कॉल्ड एज discounting factor. If you are getting something in the future and you want to find a present value of that, future to present is known as discounting. Present to future is known as. So I will do jumping, that is discounting. I will find present value of future amounts that I am expected to earn. The discount rate will be my expected rate of return. That expected rate of return of all the investors in a fancy language is known as yield. Yield is return to maturity. YTM. Yield to maturity. अगर हमने आज इन्वेस्ट किया और मैच्योरिटी तक अगर डिबेंचर होल्ड किए तो कितना रिटर्न तुमको चाहिए? मैं बोलता हूं मेरे को 9% रिटर्न मांगता हूं. I want 9% return. Coupon rate can be anything. This is not coupon rate. Expected rate of return. Investors' expected rate of return can be more than the coupon rate. Investors' expected rate of return can be less than coupon rate. आप बोलेंगे क्यों? इन्वेस्टर की चाहत कुछ भी हो सकती है ना. Where is it written that your expectation must be equal to coupon rate? Company is paying interest of 8%. Does it mean your expectation is 8%? एक्सपेक्टेशंस डू दे रिमेन सेम? कंपनी ने जो डिबेंचर इशू किए वो फिक्स रेट के डिबेंचर्स है. कंपनी ने आज अगर डिबेंचर इशू किया 2022 के अंदर, कंपनी विल सेट द इंटरेस्ट रेट एज पर एक्सपेक्टेशंस एज ऑन टुडे. कंपनी विल सेट द इंटरेस्ट रेट एज पर एक्सपेक्टेशन एज ऑन टुडे, राइट? In 2025, how is it possible to say that expectations are going to remain? Can expectations change? Expectations keep on changing, and that is why price keeps on changing. Today Russia attacked Ukraine, so risk has gone up. So if the risk has gone up, expected rate of return goes up. Expected rate of return goes up, price comes down. क्यों? This expected rate is nothing but I or nothing but R. अगर मैथमेटिक्स समझता है, ये I बढ़ाया ना तुमने, ये P कम होता है. If you increase I, P comes down. In case you studied mathematics properly or FM properly. Even if you do not study, you will pass. So P has an inverse relationship with what? I. A is what? A is nothing but amount in the future. What are you going to get in the future when you buy a bond or debenture? You are going to get an interest every year, and you are going to get a redemption value after some number of years, right? After 5 years, or in my example it was 6 years. तो basically बच्चों हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं price of a debenture is a present value of future cash flows from the bond discounted at which rate of return? Expected rate of return. That's it. अब ये expected rate YTM बढ़ भी सकता है, नीचे भी जा सकता है. कूपन रेट जो होता है वो फिक्स रहता है. Because I told you coupon rate can be fixed, coupon rate can be, and I told you yesterday itself, unless otherwise specified, whatever questions I am going to solve or discuss are of fixed rate. Variable rate समझने के लिए बहुत complex होता है. Variable rate is not something easy, because variable rate you need to understand a benchmark.
यू नीड टू अंडरस्टैंड स्प्रेड, वो जो डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड बोलते हैं, बहुत हाई लेवल है। यही समझता नहीं बच्चों को, इधर तो इसी पे सो जाते, वो सो गया था उधर, वो बाजू वाला सो गया था उसके बाजू में, वो मार्शल आर्ट्स के बाजू वाला, हाँ सो गया था ना, क्या 2 मिनट पहले। सो क्वालिटी ऑफ क्राउड। सो प्राइस ऑफ डिबेंचर is nothing but present value of future cash flows discounted at what expected rate। अब मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं उसको बोलते हैं YTM। अगर आपको देखना है YTM तो कहां पे मिलता है, ये आरबीआई के वेबसाइट पे जाओ, आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स का YTM मिलता है, या यू कैन गो टू आरबीआई वेबसाइट पे जाने का, नीचे करंट रेट रहता है, क्या रहता है, करंट रेट। तो करंट रेट में यहां पर आपको दिखेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर, आरबीआई मैनेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सो वी आर इन 2022, आफ्टर 10 years इट इज 2032। आप बोलेंगे क्यों? 10 year के जो बॉन्ड्स होते हैं दे आर द वंस विच आर ट्रैक्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। कोई भी गवर्नमेंट का आपको क्रेडिट रेटिंग देखना है या उस कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, फैक्टर्स क्या हो रहा है, वो चेक करने के लिए आपको 10 year का यील्ड चेक करना होता है। तो इंडिया में अभी 10 year यील्ड मतलब 2032। So look at it. There are 6.54% government securities maturing in 2032. 6.54 is a coupon rate. Is what? So RBI ने बोला गवर्नमेंट के बिहाफ पे कि हम आपको हर साल 6.54% इंटरेस्ट रेट दे देंगे। बट मार्केट का एक्सपेक्टेशन राइट नाउ कुड बी हायर, कुड बी लोअर। हाउ मच इज एक्सपेक्टेशन? वो राइट साइड पे रहता है 6.6925, ये अभी का चल रहा है अपडेट। आरबीआई वेबसाइट इज नॉट अपडेट ऑन अ रियल टाइम बेसिस। 6.69 आरबीआई ने प्रॉमिस किया था 6.54, बट इन्वेस्टर्स बोल रहे भाई नहीं, अभी रिस्क बढ़ गया है, हम 6.54 पे मानेंगे नहीं, हमको कितना चाहिए 6.69। इफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टर्स गो, प्राइस ऑफ डिबेंचर गोज डाउन, these debentures right now will be trading below their face value। अगर ये डिबेंचर की प्राइस आपको देखनी है, इट विल बी बिलो फेस वैल्यू, ट्रू प्राइस। अक्रूड इंटरेस्ट विल बी समथिंग डिफरेंट। अक्रूड इंटरेस्ट वो प्राइस होता ही नहीं ना, अक्रूड इंटरेस्ट इज फॉर दैट नंबर ऑफ डेज। कुछ समझा क्या? अब आपको यहां पर मैं एफएम के अंदर एक मैंने आपको यूएस का गवर्नमेंट का वेबसाइट दिखा था। यूएस में ये बहुत अच्छे से मिलता है, यूएस ट्रेजरी यील्ड्स। एंड आपको एक वेबसाइट आता है यहां पर यूएस ट्रेजरी का, home.treasury.gov, नहीं ये नहीं है, दिस वेबसाइट यूएस ट्रेजरी डेली यील्ड, डेली यील्ड का एक खाता है, नॉट दिस वन, यूएस ट्रेजरी डेली यील्ड। आई विल शो यू जस्ट अ सेकंड एंड यू विल अंडरस्टैंड 2022 में क्या हो रहा है। बोलता हूं home.treasury, वही है home.treasury.gov, एक टेबल आता है डेली ट्रेजरी बिल रेट्स। यार हाँ आ गया, 4 weeks के अंदर मेरे को डेली डे बाय डे चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, द चेंज द वेबसाइट, इट सीम्स सो इरिटेटिंग। उन्होंने बाकी मेरे को 10 year बॉन्ड डेली, जस्ट अ सेकेंड, व्हाई द हेल, डेटा एंड चार्ट सेंटर के अंदर रहेगा। आई जस्ट शो यू, एफएम के अंदर आया था ना रे यूएस ट्रेजरी, तो वही तो यूएस, आज भी यूएस ही सर्च किया ना। आज उन्होंने वेबसाइट इधर ही है कर रेट्स, आपको दिखा था यूएस के अंदर आपको ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है ना, डेली ट्रेजरी स्टेटमेंट, नो यूएस ट्रेजरी यील्ड्स डेली, डे बाय डे डिफरेंट डिफरेंट मैच्योरिटीज के चीजें दिखती है। आज नहीं दिख रही है, छोड़ दो, मैं दूसरे ऐप पे लेके जाता हूं आपको। लुक एट दिस, investing.com, ऑन investing.com ऑल्सो you'll फाइंड दिस। नहीं, हमको ट्रेडिंग नहीं करने का है, बंद हो जाए एडवर्टीजमेंट टू क्लोज। So if you go to investing.com, you have this app, then you can search there, just type करो 10 year, आपको बहुत सारे गवर्नमेंट्स के आ जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स 10 year,
bond yield, NYSE. This is trading on New York Stock Exchange. So look at this, and I'll just search it for, let the chart come. Now this is a chart for last, I just want, let's say, daily chart for the last 1 month. नहीं, वो पूरा दिखा रहा है. Now, yes, look at this. In last 1 month, if you can observe, or if you look at little more than that also, if I say last 1 year, look at this. Can you see? This is 2nd of August 2021. 2nd of August 2021, US Treasury had the 10-year yield at 1.203. नीचे देखना है आपको. This is where, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा वहां पर. ये black color, I can't zoom this. This is not possible. 1.2% was the yield. Investors in the United States, or investors investing in the US government bonds, were expecting 1.2% per annum in August 2021. ये यहां पर है. कैन यू, नहीं दिख रहा है ना उधर, वो थोड़ा सा बाहर जा रहा है उधर. देखो उधर, ये कैन यू सी देयर? घर पे जूम वाले पब्लिक को दिख रहा होगा. जूम पे प्रॉब्लम नहीं आएगा. यहाँ पे प्रोजेक्टर पे स्क्रीन से बाहर जा रहा है. आई थिंक दैट प्रोजेक्टर इट इज विजिबल. दैट प्रोजेक्टर 1.20 इज विजिबल इन माय ओपिनियन. दिस, वो वाला कभी भी विजिबल है क्या? नहीं. सो 1.20, प्रोजेक्टर से बाहर गया थोड़ा सा. राइट नाउ द सेम यील्ड हैज कम अप टू 1.904. कैन यू सी 1.90? And that is the reason why equity markets have fallen substantially in this particular period. क्यों? Yield, when it goes up, spikes up. Yield is interest rate, expected rate goes up. If expectations start going up, prices have to fall down. Because otherwise, your interest amount must go up. But interest amount तो same रहेगा, because bonds are fixed rate bonds. जाने दो, ये अकाउंटिंग करने के लिए कोई जरूरी नहीं है. ये मैंने सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए लिखा है, इसलिए मैंने लिखा भी है जीके. बट ये आपको जिंदगी में समझ में आया ना, तो बहुत पैसा कमा सकते हो. एफएम के अंदर मैंने आपको एनएचआई के बॉन्ड्स के ऊपर, रिस्क फ्री बॉन्ड के ऊपर मैंने कैसे 24-25% पर एनम कमाया था, दिखाया था तुमको, याद होगा तो. एनएचआई के बॉन्ड्स का मैंने जर्नल एंट्री के साथ दिखाया था तुमको. लुक एट इट. जनरल नॉलेज के लिए ये की कॉन्सेप्ट्स है बॉन्ड्स के लिए, याद रखना, जिंदगी में बहुत फायदा होगा. बॉन्ड प्राइस फ्लक्चुएशंस आर लेसर than the equity fluctuations. Bonds don't fluctuate like equity shares. Why? Bond market में, as an investor, you get a fixed return in the form of interest. You have a fixed redemption value which is guaranteed. Equity में, there is no such thing. In equity, you are supposed to get a share of profit. You are affected by a variety of factors. Like today I shared one news on your group. India Bulls के आज इंडिया बुल्स में से बुल्स जा चुके हैं फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 month. इंडिया बुल्स का एक, पढ़ा नहीं न्यूज मैंने तुमको, तुम्हारे ग्रुप पे नहीं भेजा? भेजा ना? पढ़ा नहीं ना? टेलीग्राम देखने के नहीं तुमको बेवड़े हो? इंस्टाग्राम देखो ना. नहीं भेजा मैंने? इंडिया बुल्स लॉस्ट सब्सटेंशियल वैल्यू टुडे. टुडे ऑल इंडिया बुल्स शेयर्स. क्यों? देखो ना, इंडिया बुल्स की इक्विटी, इंडिया बुल्स के बॉन्ड को इतना नहीं लगा है. बॉन्ड्स आर ट्रेडेड ऑन द ओटीसी मार्केट. दोस बॉन्ड्स आर नॉट अफेक्टेड. लुक एट इंडिया बुल्स. इंडिया बुल्स कंपनी है, कॉन्सेप्ट नहीं है. हाँ, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अभी रिकवर हो गया ससुरा. सो बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप ये इसके पहले देखो 1 month, लुक एट इट. दिस इज द ग्राफ ऑफ इंडिया बुल्स. ससुरा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत डाउन हुआ है, बहुत पीटीएस के. क्यों? कॉर्पोरेट गवर्नेंस. प्रॉफिटेबिलिटी पे इतने नहीं लगे, लेकिन इसका जो प्रमोटर है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं अबाउट फ्रॉड. समीर गहलोत करके बंदा है. स्टॉक कहां से कहां आ गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? 2018 में ससुरा 1300 पे था, 1300 से आ गया 167 रुपीज इक्विटी. बॉन्ड्स में इतना लॉस नहीं. इंडिया बुल्स के बॉन्ड्स भी है.
India Bulls has a equity, India Bulls has a bond. During the same period, bond prices have not gone up. This equity has fallen by almost 75% यार. चेक करो ना आप. ये क्या था? अभी तो दिख रहा होगा तुमको कम दिनों. मई 2018 के अंदर शेयर प्राइस वाज 1377. टेक ऑन योर कैलकुलेटर. 1377 माइनस 167 डिवाइडेड बाय 1377. इमीडिएटली करना चाहिए यार. क्या बैच है यार. 87%. मैंने तो 70% बोला था. 87% of its market value for equity is gone. Bonds have not fallen by that much percentage. Bonds में फ्लक्चुएशन कम है क्योंकि बॉन्ड वाले को असेट तो है ना सिक्योरिटी करके अवेलेबल. इंडिया बुल्स का बिल्डिंग होगा, इंडिया बुल्स के जो भी असेट्स हो गए, देयर आर असेट्स आर गिवन एज अ सिक्योरिटी एंड दैट टू असेट्स गिवन एज अ सिक्योरिटी आर ऑफ अ मोर अमाउंट देन द अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स. कोई भी बंदा जब लोन देता है, 1 लाख का लोन दिया, सिक्योरिटी 1 लाख का नहीं लेता है. सिक्योरिटी 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख का सिक्योरिटी लेके रखता है. जाता है क्या दिमाग में? तो बॉन्ड होल्डर्स को उतने लॉसेस क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी था. वही तो मैंने यहां पे उर्दू में लिखा है. बॉन्ड प्राइस के अंदर जो फ्लक्चुएशन होता है वो इज लेसर देन द फ्लक्चुएशन इन इक्विटी. वहां पे इंडिया बुल्स लिखने को नहीं आता क्या तुमको? सिर्फ देखते रहो तुमको स्पून फीडिंग करके रहना चाहिए यार. क्रिएटिविटी, खुद का कुछ ये तुम लोगों को नहीं चाहिए तो मैं जर्नल एंट्री सिखाता हूं यार. It would have been done. I can finish up the chapter by tomorrow. By tomorrow chapter will be over very easily, आराम से. क्यों? डेट के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2-3, मतलब यूनिक क्वेश्चंस अगर करें 2 या 3, इक्विटी के ऊपर 4-5, जर्नल एंट्रीज ऑफ डेट 3, इक्विटी के लिए और 2 एंट्रीज ऐड करेंगे बोनस के लिए. इट्स दैट इजी टू पास. बट कॉन्सेप्ट्स जो है ना बच्चों, तुमको इंटरेस्ट लेना चाहिए. अदरवाइज यू डू नॉट नो द फ्यूचर. अब ये यहां पर इंटरेस्ट होगा तो फ्यूचर में बहुत फायदा होगा यार. लिखना चाहिए ना तुम लोगों ने. प्राइस ऑफ बॉन्ड एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हैव इनवर्स रिलेशनशिप. एक्सपेक्टेड रेट गोज अप, प्राइसेस विल फॉल डाउन. यूएस के अंदर यूएस बॉन्ड यील्ड्स हैव गॉन अप. क्यों? यूएस के अंदर इंफ्लेशन राइट नाउ इन 2022 इज एट ऑलमोस्ट 40-year हाई. यूएस ने जो इन्फ्लेशन देखा था 1970s में देखा था ऐसे इन्फ्लेशन. हाईएस्ट इन्फ्लेशन यूएस हैज गॉट राइट नाउ. सो it is expected that in 2022 the central bank in the United States called the Fed Reserve will increase the interest rates 6 times 7 times in the next 8-9 months. In the next 8-9 months interest rates are expected to go up in the United States because of what? Inflation. Why is inflation so high in the US? That logic will come in a group 2. The amount of fiat money that they have printed and the credit money that has got created. ये आपके 12th में था M1, M2, M3. Money supply. US to counterattack COVID created a lot of money in the economy. They created some money on paper that is called as a credit money. Thin money created out of thin air. बोलेंगे thin air से पैसा बनाते? हाँ, तुम नहीं, सेंट्रल बैंक. तुम नहीं कर सकते हो. वो क्रिएट कैसे होता है? तो वो मनी सप्लाई बढ़ाया, उसकी वजह से इंफ्लेशन बढ़ गया, उसकी वजह से अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट की वजह से प्राइसेस नीचे आ जाएंगे. वही लिखा है मैंने. एक्सपेक्टेड रेट, इफ इंटरेस्ट रेट्स गो अप, एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टर्स आल्सो गो अप. इफ एक्सपेक्टेशंस गो, प्राइस हैज टू कम डाउन. आप बोलेंगे सर व्हाई सर? अरे एक सिंपल लॉजिक लगाओ. बॉन्ड के केस में मेरा एक्सपेक्टेड रेट बढ़ गया, बट कंपनी जो मुझे पे कर रही है वो तो फिक्स है ना. तो लिखो लॉजिक अमाउंट गिवन बाय कंपनी एवरी ईयर रिमेन्स फिक्स बट एक्सपेक्टेशंस हैव गॉन अप. अमाउंट गिवन बाय कंपनी remains fixed. If amount given by company remains fixed but expectations have gone up, I will be willing to invest at a lower price. I'll be willing to invest but at a lower price. कुछ समझा गया? Then expected rate of return in the market is known as a YTM. It's a fancy. How to calculate YTM? You will learn in the group 2.
एक्चुअली इट इज नॉट देयर इन द सिलेबस, बट मैंने FM में सिखाया था तुम लोगों को ITM, and it is calculated using a IRR method and using following variables. IRR I am not explaining at all. Group 2 current price फ्यूचर, और नहीं, लेकिन मेरे को ग्रुप 1 में आगे जाके एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक चैप्टर में, वहां पर आता है कैलकुलेशन उसका. IRR आपके फाउंडेशन में ही था. टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर है जो CA इंटरमीडिएट में है ही नहीं, है ही नहीं. बच्चों को मालूम ही नहीं रहता है, सिखाने का नहीं है. मैंने बोला ना, टीचिंग इंडस्ट्री का सीक्रेट, इजी चीजों को सिखाओ, डिफिकल्ट चीजों को. Redemption, debt, and what? Value. These are the variables which are considered, and then the ITM is calculated. How? Group 2. Price of debenture can be above the face value or below the face value. Anything can happen. अब ये जो फंडा है, ये दिया था बर्टन मालकाइल करके बंदा है. बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिंदगी में. बॉन्ड्स ये आपकी लाइफ, पर्सनल लाइफ के लिए रिलेवेंट नहीं है, बट व्हेन यू बिकम द ट्रेजरी मैनेजर एट सम लार्ज कंपनी, कंपनीज के पास नहीं, Reliance will be getting a daily inflow of approximately 500 to 600 crore rupees, and which is peanuts if you look at American companies. 500 से 600 करोड़ रुपए आपके पास हर रोज आ रहा है कैश इनफ्लो करके. After meeting all your, maybe out of that you have to meet some expenses, but still there will be some surplus left. डिविडेंड आपको हर रोज नहीं देते हो शेयर होल्डर. आज का डिविडेंड, आज का डिविडेंड, ये कि आज का आनंद नहीं चल रहा है, तो करोगे क्या पैसे का? रिलायंस विल नेवर टेक अ रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट. रिलायंस विल बी पुटिंग इट इनटू विच मार्केट? डेट मार्केट. म्यूचुअल फंड्स, आपको लगता है इक्विटी बड़ा है, आप गलत फहमी में हो. डेट म्यूचुअल फंड्स आर वे बिगर देन द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स. डेट मार्केट इज a huge, you just don't know. I told you yesterday, loans linked to the LIBOR or debts linked to the LIBOR when the LIBOR was abolished was equivalent to 300 times of India's annual GDP. So you can imagine the size of the debt market. It's huge, it's massive. ये जो बड़े बड़े JP Morgan, Goldman Sachs वगैरह होते हैं, ये इक्विटी से, इक्विटी जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट. डेट ट्रेडिंग इज ह्यूज. जब आप डेट ट्रेड करते हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द डेट प्राइस फ्लक्चुएट्स. डेट में क्या होता है, फ्लक्चुएशंस कम होते हैं, बट द वॉल्यूम्स आर क्रेजी. यू वांट टू सी वॉल्यूम? इंडिया का एग्जांपल दिखाता हूं तुमको. इंडिया इज वेरी लेस. सो NDS करके पोर्टल होता है, RBI के, RBI NDS निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम होता है. वहां पर अब देखो, आज ट्रेड्स हो गए 6.1% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड मैच्योरिंग इन 2031. सिर्फ 875 ट्रेड हो गए, 875 ट्रांजैक्शंस हुए सिर्फ. उसका वैल्यू अंदर मिलेगा 875 पे क्लिक करने के बाद. ओपन होने दो. सो द लास्ट ट्रेड हैपेंड अबाउट 2 minutes अगो, 1526. राइट नाउ इट इज 1528. 5 करोड़ का ट्रेड हो गया, कुछ 15 करोड़ का हो गया, कुछ 25 का हो गया, कुछ हो गया. ऐसे टोटल सुबह से लेके अब तक 7,000 करोड़ का ट्रेडिंग हो चुका है इन वन सिक्योरिटी. इन वन सिक्योरिटी. ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटीज होते हैं. दीज आर ओनली ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. आई एम नॉट इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट हियर. एवरी स्टेट गवर्नमेंट सेपरेट. एंड दिस इज ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स ऑफ वन मैच्योरिटी. नाउ इमेजिन ऑल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, long term, short term in nature, and imagine the size of the market. And this is India, where the size is very less. Market is still not developed in our country. But why you should master this thing is because it is not developed today, but it will be developed 10 years, 15 years down the line. And at that point of time in your life, even if you decide, you cannot acquire the skills so easily because your brain, to a large extent, would have become dumb. Because you would be already used to do certain things, and human being likes a stability. Human being does not want to try something new. You look at your parents,
and ask your parents how many times they learn new things after their college education or formal education got over. You will get answer very less. They have to be forced. Or look at government employees. In case your parents work there, with the due respect. They don't try to learn new things, they have to be forced. Some of them are there, but majority of the workforce does not want to retrain because human being is such nature, it does not want to retrain. The reason, one of the very important reasons why I am teaching is my brain remains active. I am forced to learn, because even if I don't learn, it's okay, because none of the syllabus changes. I can teach you in a bookish manner. But आप ये जब मैं बोलता हूँ 10-15 साल के बाद I can visualize in India what has happened to Singapore, what has happened to London, that can happen to India if there is one concept of Narendra Modi which becomes successful, which he set up when he was a chief minister of Gujarat, gift. How many know gift? 4-5 लोगों को मालूम है गिफ्ट क्या लोग है. गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी. हाँ, नहीं मालूम. एक सिटी बनाया है फाइनेंशियल टेक सेंटर. सिंगापुर है क्या? सिटी है एक छोटा सा फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है. वहां पर क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है? बिल्कुल नहीं. पानी नहीं यार उनके पास. बट लुक एट द पर कैपिटा इनकम, लुक एट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लुक एट अदर थिंग्स. क्यों? फाइनेंशियल सर्विसेज हब. लंदन क्या है उनके पास? अंधेरे शाम के 5-5:30 बजे अंधेरा पड़ता है उनके पास. खाने पीने की चीजें उनके खुद की नहीं है यार. मेजॉरिटी ऑफ द वेजिटेबल्स दैट यूके गेट्स इट्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज. बट पर कैपिटा इनकम देखो, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखो, प्राइसिंग लेवल देखो, बाकी चीजें देखो. फाइनेंशियल सर्विसेज अमेरिका कहां से रूल किया है? फाइनेंशियल सर्विसेज. मैन्युफैक्चरिंग चलो उन्होंने बहुत बाद में डेवलप किया. यू नीड टू अंडरस्टैंड द गेम, एंड दैट गेम इज व्हाट इंडियन लॉ के अंदर भी आ चुका है. IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर. दिस गिफ्ट इज द नेम ऑफ द सिटी. द कॉन्सेप्ट इज IFSC. India wants to become that particular part, and which is quite possible. Why? One of the two big centers of financial services center are likely to get down. LIBOR के बाद, LIBOR का failure होने के बाद London could be affected, maybe. God only knows. Hong Kong is on the verge of getting affected big time because of the clashes that Hong Kong had with the China. एक बार कोविड पूरा खत्म होने दो, हांगकांग के लोग वापस आएंगे स्ट्रीट्स पे. If you know, just prior to COVID, there was a huge protests that were there in the Hong Kong. Hong Kong का real estate लग चुकी है. So it will be very difficult for Hong Kong to attract a new talent out there, and that is where the opportunity lies for a country like India. ये एक दिन में नहीं होगा, ये होने के लिए टाइम लगेगा. India is preparing for it. तो सिटी जाके देखो, आप पागल हो जाओगे. The kind of services center which will be set up there, it's same like it's copy paste of Singapore. अब इंडिया में वो सिंगापुर जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा वो मालूम नहीं मुझे. वो फोटोज के ऊपर, लाइक बीजेपी के यहाँ पे फोटोज देखे, पुणे में वो जो रिवर होने वाला है, बहुत अच्छा रिवर बनने वाला है पुणे के अंदर, ऐसे फोटोज दिख रहे हैं. अभी फोटोज के हिसाब से एक्चुअल रियलिटी होगा या कुछ और होगा वो प्रेडिक्ट करना मेरा, ऑब्वियसली नो वन कैन प्रेडिक्ट. बट इफ दिस थिंग्स टर्न्स आउट, द क्वांटम ऑफ डेट ट्रेडिंग दैट कैन हैपन इन इंडिया इज जस्ट मैसिव. Right now, Indian GDP is $3 trillion. Over the years, normally if you see the Japan, China or any country, once you cross about a fresh mark of $5 trillion GDP, once you cross, the countries have grown at a much faster rate, because once you have that particular GDP, per capita incomes will be much higher. Basic necessities एक बार आदमी की बहुत सारी मीट हो गई ना, आदमी का क्रिएटिविटी, दिमाग या अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा खुलते हैं. एक सिंपल एग्जांपल है, अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी इन द स्टॉक मार्केट फॉर मी इज मच मोर देन यू पीपल. व्हाई? बिकॉज आई हैव मोर मनी विथ मी राइट नाउ देन यू. सो इवन इफ यू नो सम कॉन्सेप्ट, यू कांट मेक अ मनी as much as I can make. Why? Opportunity, capital is not equally distributed. Capital is not distributed equally. That is a sad part. बट इमेजिन करो, अगर इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों का बेसिक नेसेसिटीज या बहुत सारी चीजें मीट हो गई, तो जो एडिशनल कैपिटल इंडिया के अंदर आएगा, दैट विल लीड टू विच इंडस्ट्री? द इंडस्ट्री, इट विल नॉट बी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दैट विल गेट अ ह्यूज बूस्ट. इट विल नॉट बी द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, इट विल बी द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री that will get a huge boost. And that boost is, if you look at the other countries, you will come to know, in case you have studied international economics ever.
तो इसके लिए ये ट्रेड्स ये 7,000 करोड़ कुछ नहीं है। यूएस का बॉन्ड अगर देखोगे तो ऐसा, दिस इज जस्ट $1 बिलियन। यूएस में एवरेज बॉन्ड्स दैट आर ट्रेडेड फॉर द यूएस ट्रेजरी इज अराउंड $20 to $25 बिलियन। एक ये 1 बिलियन है अप्रॉक्स इन वन डे। यूएस इज 20-25 बिलियन इन वन डे, एंड दैट टू वन स्टेट, सॉरी फेडरल रिजर्व। वहां पे तो स्टेट्स के अलग अलग होते हैं, हर एक स्टेट के पास पावर होता है। वहां पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं। अपने यहाँ पे एक ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है पूरे कंट्री के अंदर जिसने बॉन्ड इशू किया आज की तारीख में, क्योंकि बाकी नगर सेवक लोगों को अपने समझते नहीं। Our constitution has permitted municipal corporations to raise the bonds. There is only one municipal corporation in our country which knows this, तमिलनाडु में। बाकी किसी को मालूम ही नहीं है। क्यों? लुक एट द नगर सेवक्स। तुमको लगता है उनको बॉन्ड मार्केट समझेगा? मतलब तुमको उनको बॉन्ड मार्केट के ऊपर एक्सप्लेनेशन देना है और उनको एक्सप्लेन करना है और उसके ऊपर डिसीजन लेना है। बॉस तुम लोगों को समझाना मुश्किल जा रहा है तो उनको कहां से समझाओ? ये बॉन्ड है। तो अब ये फंडा जो है मालकाइन ने देके रखा है, ये फंडा बहुत काम का है। फंडा सुनो, बाय लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड। फंड मतलब म्यूचुअल फंड। यू एट ए इंडिविजुअल लेवल विल नॉट बी एबल टू ट्रेड इन द बॉन्ड्स इन ह्यूज वॉल्यूम। क्यों? ये बॉन्ड देखा आपने तो 5-5 करोड़ का एक ट्रेड था। तुम बोलते मेरे को 5,000 रुपए का खरीदने गए, 5 प्लीज, नहीं मिलेगा उधर। 5 करोड़ का एक ट्रेड करना पड़ेगा तुमको। साइज है वो बॉन्ड मार्केट का। तुम्हारे पास 5,000 है लेकिन तुम्हारे जैसे 5 लाख है ना, तो उनका बन के क्या बनता है? म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, डेट ओरिएंटेड रहते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं? बाय लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड, बाय अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इन द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ऑफ ईदर गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स आर एट पीक। पीक मतलब शेतातलं पीक नहीं, high. When interest rates are high, at that time you should buy the bonds. हाँ बोलेंगे क्यों? Because if the interest rates go down thereafter, price will go up. आपको capital appreciation मिलेगा, plus जो interest है वो तो मिलता ही रहेगा। मतलब दूध भी लिया, मलाई भी लिया। यार डिमोटिवेटिंग हो यार तुम लोग। And sell this fund when interest rates taper down. Taper down मतलब come down. ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस एंड कम इंटरेस्ट प्राइस। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया, वापस कल एक्सप्लेन करूंगा। बाय बाय।